So Ali, how far have you gone in your studies? कितनी तैयारियां हो चुकी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, दो चैप्टर्स पढ़ लिए, बाकी पढ़ने बाकी हैं। दैट्स व्हाई मैंने टेस्ट अटेंड नहीं किया। मैं अभी बाकी इंशाल्लाह आज दोपहर को स्टार्ट करूंगा 3 o'clock पे। तो मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह 9 बजे टेस्ट दूंगा। Okay. You were not there in the last class. Share capital का half chapter हम कर चुके थे. Did you go through it? नो मैम। Okay. Share capital, members, nature of shares and capital, types of shares, allotment of shares and issuing shares at a premium or at a discount. ये 5 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। और हम इसको कर चुके थे। बिकमिंग अ मेंबर, मेंबर कैसे बना जा सकता है किसी भी कंपनी का? बाय परचेजिंग इट्स शेयर्स। सब्सक्राइबर शेयर्स किसे कहते हैं? एनी आइडिया? सब्सक्राइबर्स? नो। ओके। सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, यानी वो लोग जो कंपनी को इनिशिएट करते हैं या स्टार्ट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सब्सक्राइबर्स कहते हैं। और उन्हें ठीक है। डेफिनेटली मतलब मेंबर्स तो होंगे ही, क्योंकि वो पहले लोग होते हैं जो अपना इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल कंपनी में, लिहाजा शेयर्स अक्वायर करते हैं। ठीक है, इनिशियल सब्सक्राइबर, इनिशियल शेयर होल्डर्स कह सकते हैं हम। Initial shareholders or initial subscribers. So how the shares can be acquired? By applying and being allotted shares, Shares representing the by presenting the for company. registration, a transfer of shares to them by applying a personal representative or trustee of a deceased member or bankrupt member. अब इसमें हो क्या रहा है? 3 तरीके हैं। या तो आप स्क्रैच से शेयर के लिए अप्लाई करो और आपको शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे। दैट्स वे नंबर 1। मेथड नंबर 2 इज कि कोई आपका पड़ोसी आपको ट्रांसफर कर दे शेयर्स, आपको सेल ऑफ कर दे, या आपको दे दे, आपका दोस्त ही आपको दे दे, यार मुझे नहीं चाहिए तू रख, ठीक है, आपको गिफ्ट कर दे। थर्ड, आपको कोई पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव चुन ले, आप किसी के रिप्रेजेंटेटिव हो या ट्रस्टी हो, यानी कि अगर आपके फादर का खुदा ना खास्ता इंतकाल होता है तो आप सारे ओनर बनते हो, उनके जितने भी शेयर्स हैं, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, यू वुड बी द ओनर, राइट? तो वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा आपको। या फिर कोई ऐसा आपका कजन है जो बैंकरप्ट हो गया है और वो पैसे नहीं दे सकता, तो आपने क्या किया? आपने उससे शेयर्स ले लिए और उसके बिहाफ पे पेमेंट कर दी। सो दैट कुड ऑल्सो बी अ वे, राइट? तो ये सारी चीजें आपको क्या किस तरफ ले जाती हैं? यू विल बी सब्सक्राइबिंग द शेयर्स थ्रू दीज मेथड्स। Ceasing ओके। to be a member. How ठीक you है। cease to be a member? There are 8 ways a member ceases to be a member. And what are those 8 ways? Ceases means ma'am here is like mandatory things या चीज तो नॉर्मली रोकने के लिए। Ceases का मतलब है to stop, stop being a member. अच्छा, स्टॉप स्टॉप वही वाला, सेम मीनिंग है। ओके ओके। ठीक है, स्टॉप बीइंग अ मेंबर तो कब वो, व्हेन दे विल बी स्टॉप बीइंग अ मेंबर? व्हेन द ट्रांसफर हैज हैपेंड, व्हेन द मेंबर डाइज, व्हेन द हम्म। शेयर्स ऑफ अ बैंकरप्ट मेंबर आर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द ट्रस्टी, व्हेन अ मेंबर हु इज अ माइनर रिपाडिएट्स देयर शेयर्स। ठीक है, रिपडिएट्स, न्यू वर्ड। रिपेट्रिएट वापस कर देता है शेयर्स को। वो मेंबर जो है वो माइनर है, वो 18 साल से कम उम्र का, जैसे कि अगर फादर के पास शेयर्स थे और फादर का इंतकाल हो जाता है तो उनका जो बेटा है वो 18 साल से छोटा है, हो सकता है वो 5 साल का है, 6 साल का है या 12 साल का है। तो इट इज पॉसिबल कि जो भी उस वक्त उसका उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसने रिपडिएट कर दिए हो शेयर्स, वापस कर दिए हो कंपनी को। ठीक है, तो देन एट दैट टाइम ट्रस्टी ऑफ अ बैंकरप्ट मेंबर डिस्क्लेम्स देयर शेयर्स। ट्रस्टी यानी कि कजन ने आपको ट्रस्टी बनाया हुआ है और वो बैंकरप्ट हो जाता है, आपने कहा भाई मैं रिफ्यूज करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए शेयर्स, रखें, आई डोंट वांट इट, आई डोंट वांट टू ईदर मेक द पेमेंट, आप वापस कर देते हो। नेक्स्ट, द कंपनी फॉरफीट्स और एक्सेप्ट्स द सरेंडर ऑफ शेयर्स। कंपनी ने शेयर्स वापस ले लिए, फॉरफीट कर दिए। ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी सेल्स देम इन एक्सरसाइज ऑफ अ लियन। कंपनी इसको बेच रही है इन एक्सरसाइज ऑफ अ लियन। लियन किसे कहते हैं अली? व्हाट्स अ लियन? लियन नहीं पता मैम, नेक्स्ट टू किंडर आई गेस। गूगल इट, नो। व्हाट इज लियन? फाइंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इट। Here I come. Lien means a right to keep possession belonging to another person until a debt owned by a person is discharged. Okay. Sort of you can say mortgage जैसी चीज है कि जब तक कि वो रिपे नहीं कर देता उसके डेट, तब तक के वो चीज आपके अंडर में है, जिससे उसने लोन लिया है।
एग्जैक्टली एक चीज आपकी ओनरशिप में है, आप यूज कर रहे हो मगर फुल पेमेंट नहीं हुई भी, तो जब तक फुल पेमेंट नहीं हो जाती वो आपके नाम पे नहीं हो सकती, वो मेरे नाम पे रहेगी, यू आर यूजिंग इट। सो द कंपनी सेल्स देम इन एक्सरसाइज ऑफ अ lien, द कंपनी इज डिसॉल्व एंड सीजेस टू एग्जिस्ट, कंपनी ही खत्म हो जाती है। तो ये वो सारे एट आठ मेथड्स हैं कि जिनके जरिए यू कैन स्टॉप बिकमिंग अ मेंबर। अगर इनमें से कोई भी एक चीज हो जाती है, देन यू स्टॉप बिकमिंग अ मेंबर। देन द नंबर ऑफ members, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ वन member, एक मेंबर का होना जरूरी है, एंड देर इज नो मैक्सिमम टू देर इज नो नंबर टू मैक्सिमम। All Okay. right. Read Ali, where a company has a sole member. Where the company has a sole member, the following rules will apply. The register of members must contain a statement that there is only one member and give their address. ओके, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्या कह रहे हैं कि एक स्टेटमेंट कंटेन करता है कि सिर्फ एक ही मेंबर है जिसमें एड्रेस हो, और उसका एड्रेस लिखा हुआ है। मिनिमम वन हो या सिर्फ एक हो, हम्म, जो जिसमें एड्रेस इज मैंडेटरी थिंग एग्जैक्ट। टू मेंशन. द सेकंड वन, कोरम। The act automatically permits a quorum of one for journal meeting. ठीक हो गई। ठीक नेचर है. ऑफ शेयर्स एंड कैपिटल, शेयर किसे कहते हैं, प्लीज रीड। शेयर कहते हैं a share is the interest of a shareholder in the company measured by a sum of money for the purpose of a liability in the first place and interest in the second place, but also consisting a series of a mutual convenient entered into by all the shareholders inter se. ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। Basically, it shows the ownership, like the interest of a person in the company's profits and losses. So it is measured by money, and whatever the liability is and whatever the profit it is, it will be like proportionate according to the ownership percentage. राइट, But सो I didn't get the last thing, that but also this part, but also consisting a series of mutual convenient entered by all children, इट like इज mutual understanding, on the basis of mutual understanding. This is all I covenant get. means agreements, contracts. Mutual. Okay, okay. Mutual covenants entered into by all the shareholders inter se. Inter se means mutually, with mutual understanding. Okay. Mutual understanding. Okay. Next, the key Got it. points are number one, share must be paid for. Okay, that's number one. It gives a proportionate entitlement to dividends. When once you are paying for the shares, then that means you get a right to receive dividends. Next, it is a form of bargain, mutual covenants between shareholders, which underlies such principles as majority control and minority protection. So, of course, bargain means mutual covenants means what? That we both agree to the terms and conditions, and you are also contributing to the terms, and I am also contributing to the terms. That's a bargain. A share's nominal value is its face value. So, a pound one ordinary share, for instance, has a nominal value of pound one. No share can be issued at a value below its nominal value. Point to be noted. Yes. No share can be issued at a Can be value issued. less than its nominal value. Next, It's a minimum amount. minimum amount. A One share is a form of personal A share is a property form of personal property carrying carrying rights rights and and obligations. obligations, transferable. One or more shares can be held by members. Right? Next, please read information about any special rights. Yeah, information about the social right is obtained from the one of the following documents, which are the company's house. Okay, the articles, which are the normal contents and in which share rights are defined, a resolution or agreement in incidental creation of new class of shares, uh, and a statement of capital given to the registrar within the 1 month of allotment, together with the return of allotment. Okay. Last point is not understandable. बाकी दोनों तो समझ में आ गए, बट लास्ट पॉइंट नहीं समझ आया. अलॉटमेंट क्या चीज़ है? रजिस्ट्रार के पास हम जमा कराते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल की किसका कितना परसेंटेज, राइट, Hmm. और 1 महीने के अंदर हमें जमा कराना होता है विद द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट. रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट नहीं समझ आया मुझे. और रिटर्न मीन्स ये स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है? कि कितनी ओनरशिप किस बंदे की है, वो स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल.
ठीक है, अगर फर्ज करें 3 ओनर्स हैं तो हर ओनर ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस बिजनेस में, उस कंपनी में, फॉर एग्जाम्पल तो 50 उसकी 30 20। हम्म। गिवन टू द रजिस्ट्रार विद इन 1 मंथ ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि जैसे ही शेयर्स अलॉट कर दिए गए, अब यहाँ पे फर्ज करें तीन फॉर कैरेक्टर्स हैं, एग्जाम्पल 10 शेयर्स दे दिया बी, या 100 शेयर्स दे दिया। एग्जैक्टली, ईच ऑफ देम आर इन्वेस्टिंग 50K। ओके, सो 50K के शेयर्स जो हैं हर एक बंदे को दिए जाएंगे, अलॉट किए जाएंगे, ठीक है, टुगेदर विद द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का मतलब है दैट इन केस A B C में से किसी ने बोला कि भाई हमें 50K के शेयर्स नहीं चाहिए, हमें और ज्यादा चाहिए। इनिशियली उन्होंने 50K का सोचा, लेकिन फिर बाद में इधर दे आर सेइंग नहीं नहीं हम सिर्फ 45K लेंगे, या नहीं नहीं हम सिर्फ हमें 60K चाहिए, ठीक है, सो दैट वुड बी नोन एज रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। ठीक, तो अगर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट हो रही है तो वो भी आपके ऊपर लाजिम है कि आप रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करें। कहने का मकसद ये है, एक एक मूवमेंट, एक एक एक्शन, द रजिस्ट्रार मस्ट बी इन्फॉर्म। ओके, ठीक है जी, किंजा आर यू देयर, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am, I'm here. Okay, that's great. Right, so we were just revising the points. Types of capital, what are the different types of capital? Authorized share capital, issued and allotted share capital. Authorized share capital में और issued and allotted share capital में क्या फर्क है किंजा? Issued and allotted share capitals are the capitals which the company is actually issuing to the members, and authorized share capital is specific maximum authorized share capital. Okay, it is the actually the maximum. Like for example, if I have a company in my whenever I have done my registrations, at that time I've been told that this is my maximum limit. These are the shares I can, because according to whatever my investments are, whatever my debts are, according to that I can issue the specific amount of shares. So that is actually authorized share capital. Right. Authorized share capital means that's your maximum limit of capital that you can raise from the market, from the public. Okay. And that maximum limit is decided or given by the registrar. The registrar says, Yeah. give you permission that yes, you can, like, you first, you are applying for it now as to register as a company. So you say that we would like to get permission to be able to raise $10 million from the market. So if the registrar gives you the permission, then it's okay. Otherwise, it will tell you the maximum that you cannot raise more than 5 million from the market. Okay. So now 5 million is our capacity to issue shares in the market. But what we will be doing, we won't be issuing so many shares, at once. We would be first initiating with 1 lakh shares, then 2 lakh shares, then maybe probably 50,000 more. So as and when the time passes, we will be issuing shares, issuing and allotting. Called up and paid up share capital, what's the difference, Kinza? Okay, called up shares, that first I will be issuing the shares and then we can pay later. Like half of some of the amount we'll be doing it now, and later on we can, like if maybe 20% we need to pay now, and when it's called up, then later we can pay the other amount. And paid up share capital, whatever has already been paid, and now what the amount is left, so that is paid up capital. Okay, Ali, बात समझ आई? Called up and paid up के बीच में क्या फर्क है? Ma'am, for example, called up means ready to sell, I guess, shares, and paid up means which are completely been paid and like owner completely. मुझे ये समझ आया कि अगर कॉल्ड अप है तो मतलब उसका सम अमाउंट, कुछ अमाउंट उसकी देके हमने ओनरशिप ले लिया, लेकिन स्टिल यू कैन यू हैव टू पे सम अमाउंट लेटर। और Yes. पेड अप का मतलब आपने कंप्लीट अमाउंट पे कर लिए, देयर इज नो एनी क्रेडिट remaining to pay Okay, for Ali, the owner. pay attention. Ali, pay attention. Hmm. One share cost $100, for example.
Your company has called up for $50 for a $100 share. ठीक है, शेयर की प्राइस क्या है? $100। 100. ठीक है, लेकिन आपने इशू इसको किया है $50 कॉल्ड अप शेयर, कॉल्ड अप $100 शेयर, यानी कि $100 के शेयर को आप अनाउंस कर रहे हैं कि अभी आप खरीद लो $50 का। $50 बाकी के बाद में पे करने होंगे, अभी नहीं। सो राइट नाउ यू कैन परचेज, यू कैन गेट द ओनरशिप ऑफ $100 शेयर बाय जस्ट पेइंग $50 फॉर नाउ, and later on, probably after 1 month or 2 months or 3 months or 6 months, we will be calling up the rest of the amount which is left, and then you will be paying that amount as well. That is बेसिकली ये called, इमरजेंसी में करते होंगे ना, लाइक कंपनीज जब उन्हें फंड्स की नीड होती होगी. yes, that's called up share capital. फंड्स की भी नीड, और दूसरा शेयर होल्डर को भी तो एक सस्ता लग रहा है ना कि यार $100 का शेयर मुझे अभी से 50 में मिला, मुझे अभी हम्म. एकदम से इतना सारा अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, I can just pay 50 and I can get $100 share, and later on I'll pay मैम, 50. will their profit be gained on the 100% thing or the 50% thing for the time period, for the unpaid time period? It will be gained on 100% thing, but you cannot transfer the share unless you pay full Hmm. for the ठीक share. है. So you Okay, ma'am. can't cash that profit. Okay. Okay, okay. Next, Okay. paid up share capital. Once you have paid 50, that means you have paid only 50. That's it. That's your paid up share capital. अब कंपनी भी तो अपने पास कई हिसाब किताब कर रही होगी ना, तो कंपनी अपने पास Hmm. किसी नाम से लिखेगी, पेड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। पेड अप हमारे पास कितने पे हो चुके हैं? 150 पे हो चुके हैं, और हमने कॉल कॉल कितने की थी? 200 की कॉल की थी। Okay, so that's how they are going to maintain their books, and this is what it means. Loan capital. What's a loan capital? Ali, read. Loan capital comprises debentures and other long-term loans to a business. To a business. So Long loan term debentures. Debentures basically loan notes. loan notes, it's kind of a, like, you call that document a share which gives the Conjunction. company the capital to work. And you call that document a debenture which gives the company a loan to work. Okay, simple as it is. Next, Okay. market value. Market value share of a public company are freely transferable, providing the appropriate procedure are followed. Sure, okay. And therefore may be subsequently sold by some or all the shareholder. The sale price will not be necessarily be the nominal value. Rather, it reflect the company may be later or less than the nominal value. ठीक है, मार्केट प्राइस से सारी बात समझ आ गई, सिवाय एक चीज के इसमें ये है कि इट शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रीली if all the like SOPs are being followed, but the prices is not mandatory to be the same. It will be higher or lower as per the goodwill of the market, but the last line says that it could be less than the nominal value. And earlier we studied that के nominal value से कम में नहीं बेच सकते, तो ये बात सिर्फ मुझे समझ नहीं आई लास्ट लाइन की, Yes, can बाकी you सब समझ में आ गया. please explain to Ali? Actually, the thing is कि जब हम nominal, when the company is issuing the shares, we cannot get the shares in the less than a nominal value. For example, if the nominal value is 1, then the company is bound to sell us maybe at 1 or more than that, not less than. But if we talk about the market value, for example, I am in need of a cash and I want to sell you my shares, and I might be selling you for less than 1 because I really need to liquidify my amount. So then I can. If it's a market thing, then I can. But if you talk about company, then companies cannot. Okay, company cannot. Okay, 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 got it. Clear. Ma'am, clear. Conducting. No problem. Right. So Absolutely sure. Happy feeling. एक बात समझ आ जाती है ना. Okay. next, types of shares. What are the different types of shares? Okay, ordinary share है. Ordinary share तो सबसे easy है. If there is no difference between share, okay, equity, बल्कि एक ही लाइन है तो. Types of shares, we have ordinary shares, we have preference shares, we have class rights.
Okay, what do you understand by ordinary shares? Ordinary shares is normal shares. Basically, we have studied two, ordinary and preferred. Ordinary, in which like a normal profit is divided after all the expenses and liabilities being cleared. On the other hand side, if it's a preferred shares, then first of all your like profit will be shared between the preferred shareholders, but that would be the fixed amount, and then the rest of the things will be paid. जबकि ऑर्डिनरी में अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, लेकिन वो Yes, सारे एक्सपेंसेस के बाद उनको पे होता है. Kinza, can you please explain? Yeah, ordinary shares, like you just said, that ordinary, we get distributed ordinary shares after we have done with all the expenses and everything. First, preference is to pay after giving salaries to the employees and all the expenses. First, we pay to the preference shares, and then we move forward to the ordinary shares. Preference shares is a specific amount, like a percentage. It's a specific, no loss, no profit. And profit is obviously there, but a specific amount. But if we talk about ordinary shares, we are just getting whatever profit and loss we are getting after we have done all the payment to the preference shares. On the other hand, preference shares holders also have some special rights, like dividends, return of capital, voting, appoint to or remove a director. They can do these special four of the things which ordinary shares cannot do. And even when there's a liquidation process going on, first the preference share will get the money, and if there's still some money left, then the ordinary shareholder will get the amount. Does that make it clear, Ali? Yes, ma'am. Right. So we have some dividends, return of capital, voting rights, right to appoint and remove a director. These are the special rights which a shareholder owns. Preference shares, they are shares carrying one or more rights, such as fixed rate of dividend number one, or preferential claim to any company profits available for distribution, right? Next. Advantages and disadvantages of preference shares, I asked you to read yourself. Redeemable shares. What are redeemable shares and what are treasury shares? What's the difference, Kinza? Treasury shares are the shares which we buy of our own company. Like I have my own company, I'm buying some of the shares and keeping it in my keeping it aside in my treasury box, and not and but doesn't mean that I have bought a lot of shares and I will also be getting the voting rights and all the other benefits from it. It's just a treasury stuff. I'll just be keeping it there, and later whenever I need some cash, I'll go to the market and I'll sell it. So that are treasury shares. And redeemable shares, whatever the company has bought, they can use it for future specific date. Ali, make sense? Or need? Yes, ma'am. Like treasury shares are like the reserve thing. Like for example, जैसे national Exactly. reserves होते हैं हमारे मुल्कों के, उसी तरीके से ये treasury shares होते हैं. Exactly. It will be But I didn't get the one thing. If like you could get benefit from it, then why to keep it in the treasury shares? What's like the point? the point is, why do you uh, purchase dollar and keep it with you? My question to you, for as savings, why do you do that? Sometimes we all Okay. do it. We purchase a foreign currency and we just keep it. Hmm. Or Like for the investment purposes. exactly. Or for Yeah. we also do, we purchase gold and we keep it. We lock some money in gold or in bonds or in these kind of things. Okay. Why not in shares? We also do it in shares sometimes. But the company also does it, and it does it, and it does it with the intention of keeping it as a savings, as a deposit. So that time, those shares will be called treasury shares. They won't be used, they won't be circulated in the market, they will be kept separately, and they can reissue them without usual formalities. They can do that, but they will be keeping it for some time.
And redeemable Okay. shares, they are the shares which can be bought by a company either at a future specific date or at the shareholders or company's option. That means when the company is selling a share, there is a date mentioned on it that it is redeemable on 1st of January 23. That means the company will buy it back on 1st of January 23 from the person whoever is holding it. So that is What known as about redeemable what share. is about company's option? Like Company's specific option, date of it, it may happen that there is no specific date written on the share, but by nature, it is a redeemable share. So whenever the company will call for it, will call to buy it, then the holders will have to come to the company and sell those shares to the company. Okay, next. Treasury, done. Variation of class rights. Variation of class rights we were studying last class, that it means that you can shift, you can transfer from one class to another, from ordinary to preference, from preference to ordinary, from redeemable to irredeemable, from irredeemable to redeemable. But in doing so, some of the members might feel that it's not fair. So there are some rules being set that the company can't just go and change the class rights just like that. Okay, so there is a procedure, there is a proper way in which it will happen. So the first when variation rules apply, when variation rules apply, कब कब variation के rules apply होंगे? Number one, to issue shares of the same class or to allottees who are not already members of the class. Ji Kinza, over to you. Like if, for example, there are two classes, ordinary class and preference share class. If someone is shifting to ordinary from preference and preference to ordinary, so they are saying to issue share of the same class or allottee who are not already member of this class. So there can be variation, like how to explain, like if we talk about the case below. So there are actually some of the shareholders had some issues. Bonus share were being issued and they were giving all the bonus shares to the uh, preference shareholders, to ordinary shareholders. Now like for example, 50 of the bonus share issues were bonus company was issuing 50 of the bonus shares, but they were giving all these 50 bonus shares to the ordinary one. And now the preference shareholders were very upset. Now they also wanted bonus share. So they were saying, now as more of the shares will be with the ordinary shareholders, then we will not be in that power. Like the power we were already enjoying, we will not be enjoying that power anymore. Although the agreement, whatever has been done before the consent, it was clearly indicated that whenever the bonus share will be issued, those shares will be going to the ordinary shareholders. But now preference shareholder went to the court and they objected. Later, court decided and told them that anyway you have the authority and power. You have the special rights, not the ordinary shareholders. So there is no difference between whoever is getting the bonus share, because preference share already have a special right. They can enjoy all the whatever authority they were already enjoying, they will still be enjoying that. So that was the decision of the court, that it's okay, bonus share will go to the ordinary shareholders. जी अली, कुछ पल्ले पड़ा? बहुत सारा बल्ले पड़ गया बेसिकली ये कि जो है ना लाइक इफ अ कंपनी इज लाइक इशूइंग द बोनस शेयर्स देन लाइक दोनों को लाइक ध्यान में रखना चाहिए, प्रेफर्ड शेयर ओनर्स को भी और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को भी। और सिर्फ एक कैटेगरी को हमें लाइक वो नहीं करना चाहिए, लाइक अब मेक अवेलेबल टू सेल, बल्कि दोनों से ही कंसेंट लेना चाहिए। मुझे ये समझ आया, क्योंकि अगर नहीं नहीं, ऐसा लाइक नहीं। एक्चुअली वो ये कह रहे हैं कि अगर तो हमारे एग्रीमेंट में डिसाइडेड है कि आपने उन्होंने लेना है उसके अंदर अगर उनको ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को देना है बोनस, तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ही लेंगे, अदर पार्टी विल नॉट गेट द बोनस शेयर्स। बट ऑन द अदर हैंड अदर पार्टी ऑब्जेक्ट करी थी कि क्योंकि अब उनका परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा। पहले उनके बिल्कुल 50 शेयर थे और 50 प्रेफरेंस के थे, अब क्या होगा, अब 70 ऑर्डिनरी के हो और जाएंगे।
और 50 और इनके ही 30। रहेंगे, तो दे वर सेइंग कि अब हमारा परसेंटेज कंपैरेटिवली वुड बी लेस। तो उन कोर्ट ने ये बोला कि आपका परसेंटेज लेस हो या मोर हो, डजंट मैटर, बिकॉज यू विल बी एंजॉयिंग द सेम लग्जरी। तो आपको इसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअली ये इशू आता है जब सेम क्लास जो होती है, जो ऑलरेडी मेंबर नहीं होती उस क्लास का, उनके जब डिस्प्यूट्स चल रहे होते हैं, तब ये कोर्ट फिर इंटरवीन करती है। ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये और कहना चाह रहे हैं इन दिस एग्जाम्पल दैट दिस कैन नॉट बी कॉल्ड अ वेरिएशन ऑफ क्लास राइट्स, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर हम बोनस थोड़ा सा दे भी दे रहे हैं किसी एक क्लास को, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आपके राइट्स अनटच्ड हैं, योर राइट्स आर देयर एज इट इज। Next, to subdivide shares of another class with the incidental effect of increasing the voting strength of that other class. Subdivide shares of another class मतलब, अब इसमें जो केस आया था उसमें बताया गया कि भाई एक पर्सन ने 50 पैसा शेयर्स लिए और दूसरे पर्सन ने 10 पैसा शेयर्स लिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इस पर्सन ने एक शेयर खरीदा जिसकी प्राइस थी 50 पैसा, और यहाँ पे दूसरे पर्सन ने एक शेयर खरीदा जिसकी प्राइस थी 10 पैसा। बाद में कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम अपने तमाम शेयर्स को 10 पैसा वाले ही कर दें, जो 50 पैसा वाला शेयर भी है उसको भी 10 पैसा के 5 शेयर्स कर दें, बना दें। और इन्होंने वैसा ही किया, 10 पैसा के 5 शेयर्स बना दिए। अब ये सुन के जो जिस बंदे ने 10 पैसा के शेयर्स लिए थे उसको खलबली मच गई कि ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि वो शख्स जिसने सिर्फ एक ही शेयर खरीदा है, उसके पास एक वोटिंग राइट आता है उसूली तौर पे। लेकिन अगर कंपनी ने उसके एक शेयर को 5 शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया तो फिर तो उसके पास 5 वोटिंग राइट्स हो गए। यस और नो? तो जिसकी वजह से ये पर्सन फील कर रहे हैं दिस इज अनफेयर। मगर कोर्ट का क्या फैसला आता है? कोर्ट का फैसला आता है नो बेटा, दिस इज नॉट अनफेयर। उसने, उसके पास 50 पैसा था, उसने 50 पैसा इन्वेस्ट किया। अब ये तो हमारी चॉइस थी कि हमने उसको 50 पैसा का एक शेयर देना है कि 5 शेयर देने हैं कि 15 देने हैं। ये तो हमारी चॉइस थी, हमने उसको एक ही दिया। अब हमने अपना रूल चेंज कर दिया, अब 10 पैसा के सारे शेयर है, एंड देयरफॉर उसके पास 50 पैसा थे इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो 5 शेयर्स भी ले लेता, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो इसमें आपके साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही, तो आप इस खुशफहमी में ना रहो कि आपके साथ ज्यादती हो रही है। ठीक है, there is nothing happening which is unfair, and it is also not even changing your position in the company, your power in the company. Okay, so that's what it is. Then to return capital to the holders of preference shares, capital return कर देना preference shares को, to create and issue a new class of preference shares with priority over an existing class of ordinary shares. ये सारे वो मामलात हैं कि जिसमें there is no variation of class right. प्लीज नोट दैट ये सब जो पॉइंट्स हमने पढ़े इसकी वजह से क्लास राइट्स ऑफ द मेंबर्स वायलेट नहीं हो रहे, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, एज इट इज जो जहां था वो वही है। ठीक है जी। नेक्स्ट, स्पेशल सिचुएशंस। व्हाट आर द स्पेशल सिचुएशंस? किंजा पढ़िए। If the class rights are set by the article and they provide a variation procedure, that procedure must be followed for any variation, even it is different to the statutory procedure. आर्टिकल्स में जो लिखा If गया है वैसे ही फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। if class rights are defined otherwise than by the article and there is no variation procedure, consent of a 3/4 majority of the class is both necessary and sufficient. कि अगर आर्टिकल्स में कोई प्रिस्क्रिप्शन, कोई प्रोसीजर प्रिस्क्राइब नहीं है कि जिसमें आपको ये बताया जाए कि अगर वेरिएशन करनी पड़े तो किस तरह से की जाएगी, अगर कोई कायदा कानून नहीं गिवन, देन व्हाट टू डू? 3/4 मेजोरिटी की कंसेंट जरूरी है, नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी। connected.
Minority appeals to the court for unfair prejudice. Minority, Ali पढ़िए. A descending minority holding 15 or more of the issued shares may apply for the court within 21 days of the class consent to have the variation cancelled as unfairly prejudicial. 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 क्या मतलब? Okay. अगर जो है माइनॉरिटीज के पास 15 या 15 से ज़्यादा परसेंटेज होल्डिंग है तो वो विद इन 21 डेज जो है ना लाइक कोई भी केस कर सकती है कि अगर उनके साथ कुछ अनफेयर हुआ है एज पर लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स Yes, relating that within 21 days, number one, and minority which is holding 15% 15%. or more These of two the are the issued conditions. shares. Not less than 15%. 15% तो कम से कम उनकी शेयर होल्डिंग होनी ही चाहिए. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल एंड इनिशियल शेयर होल्डिंग्स. यानी कि जब आपने स्टार्ट किया कंपनी को तो उस वक्त कैपिटल और उस वक्त शेयर होल्डिंग्स क्या क्या थी ये सब अनाउंस करना जरूरी है, डिक्लेयर करना जरूरी है. किसको डिक्लेयर करेंगे? रजिस्ट्रार को. द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, द एग्रीगेट नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर, द प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स, द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, aggregate nominal value, the aggregate amount unpaid on the total number of shares, information that identifies the subscribers to the memorandum of association, and in respect of each subscriber, the number, nominal value, and class of shares taken by them on formation and the amount to be paid up. इसमें से कोई बात जो ना समझ आ रही हो? I think it's all very obvious. सब नॉर्मल है मैम. Allotment of shares. Kinza. Kinza can't hear you. Sorry, ma'am. What are you saying? Allotment of shares, please read. Okay, director exercise the delegated power to allot shares either by virtue of the articles or a resolution in general meeting. क्या कह रहे हैं? Directors can delegate powers. They can give their powers to other shareholders as well. And either by virtue of the article, either by because it is written in the article, or maybe it has been discussed in the general meeting. The resolution. All right. Next. Public There are offer. various methods of selling shares to the public. Public company allotment of shares. So there are various methods you can sell the shares to the public. Number one, public offer. Number two, offer for sale. And number three, placing. Now, what's the difference between these three? Ali, please read. Public offer where members of the where members of the public subscribe for shares directly from the company Directly to the to the company. company. Okay. Number two, offer for sale. Directly जो है ना like public offer होती है like second is offer for sale, an offer to member of the company to apply for share based on the information in a prospectus. And the third one is placing, a method of raising the capital where the shares are offered in a small or large blocks to person institution who have previously agreed to purchase the shares at a predetermined price. तो बेसिकली तीन तरह से हम लोग अलॉट कर सकते हैं शेयर को. एक डायरेक्टली कंपनी से, दूसरा के उसके प्रोस्पेक्टस के थ्रू, और तीसरा है कि जब भी हमें फंड रेज करना हो उस तो तब. फंड रेज करना हो और प्लेसिंग में एक चीज है कि ब्लॉक्स में सेल होते हैं, यानी कि यू जस्ट कांट परचेज और सेल वन शेयर, यू हैव टू परचेज अ सीरीज ऑफ शेयर्स और ब्लॉक्स ऑफ शेयर्स. And that too on predetermined price. Right. Now, private company allotment of shares, it is straightforward. Okay, you just purchase and maybe the company purchases. Director powers to allot shares. Kinza. Directors of private companies with one class of shares uh, have the authority to allot share unless restricted by the articles. Directors of public companies or private companies with more than one class of share may not allot shares, except to subscribe to the memorandum and to employees share schemes without authority for the members. Any director who allots shares without authority commits an offense
under the Company Act 2006 and may be fined. However, the allotment remains valid. क्या कह रहे हैं? They're saying that the directors of the private companies, they have the authority until and unless they can sell the shares, they have the authority, but until and unless they are restricted. Some of the articles restrict them, so then it's a different case. Otherwise, private companies directors have the authority to allot the shares. On the other hand, directors of public companies or private companies with more than one class of share, like for example, if they have different kind of shares, not only one class, then they are not expected to do it without any, they don't have the authority from the members to do it on their own. If they still do it, if they still sell it without allot it without the authority, if they're doing it, it's an offense, they can be fined. But on the other hand, whatever shares they have issued, they will remain, they have allotted, they will remain valid. It doesn't mean that the customers who have got those shares, they will bear the cost. No, that those shares are the valid ones, but the directors will have to pay maybe fine. They will have to be fined. Right. Exactly. Preemption rights. What are preemption rights? Ali. Preemption rights are the right of the existing ordinary shareholders to be offered new shares issued by the company pro rata to their existing holding of the class of shares. Okay, that's it. That's it. What do you understand by pro rata? Basically, these are the specified shares which are only offered to the existing shareholders. These are the Depending shares which are offered to the existing existing shareholder. shareholders on the pro rata base. And what is A this? percentage of What share is this pro ownership, rata basis? like the same percentage in which they have the holdings in the company. Exactly. Exactly. Pro rata, you can remember this rata is ratio. The same ratio Ratio. in which they are holding their existing shares, like maybe you have 50%, I have 50%, Kinza has 20%. So the shares would be divided in this ratio only 50, 50, and 20. Next, rights issue. A right Kinza, issue is okay, Kinza. Right issue is the right given to a shareholder to subscribe for further shares in the company, usually pro rata to their existing holding in the company shares. It is actually, right issue is a share given to the shareholders who has already been subscribed for the future shares in the company, who has already been, like they have already given the they have already asked for in the previous in the past time, they have already asked for those shares. So only right issue, only those people will get the shares of the right issue. please also read exclusion of preemption rights. What does this mean? A private company, maybe its article permanently excluded these rules so that there is no statutory right for the first refusal. Okay, exclusives of sometimes it has sometimes it is like we talk about the exemptions, so they have already been excluded for this right. Preemption rights. Preemption rights, that means to be distributed in the pro rata basis. Okay, so if that's excluded from the articles, then there is no statutory right of first refusal. There's no right. Okay, next, disapplication of preemption rights. Ali. Uh, any company may, by special resolution, resolve that the statutory right of the first refusal shall not apply. Such resolution to disapply the right may either be combined with the grant to the director of the authority to allot shares, or simply permit an offer of shares to be made for cash to a non-member without first offering the shares to the existing members. Yes, Kinza, what did you understand by this? Disapplication. Nothing, ma'am. I didn't even get it. What is actually this mention right? Okay, okay, okay. Let's just look at it once again. Preemption rights are the rights of existing ordinary shareholders to be offered Yeah. new shares
issued by the Yeah. company pro rata to their existing holding of that class of shares. That means if Kinza and Ali, both of you are shareholders of my company, you have this Mhm. preemption right that me as a company must offer the shares, new shares to you guys before I offer them in the market Before anyone else. to anybody else. Okay. So that Okay. right is your right, which is known as preemption right. Okay. Okay. Got it, ma'am. Okay. Now, what is the exception? It is exclusion of preemption rights. A private company Mhm. may, by its articles, permanently exclude these rules. That means in my articles, in the company's articles, I have specifically mentioned that my shareholders will not be having preemption rights. That means if I want to issue new Mhm. shares, I can directly go to the market and stock exchange and issue them over there. Or I can directly offer it to any third person and issue it to them without considering you guys first, without offering to you guys first. यहाँ तक clear है बात? Okay. Drawback Ma'am, of what a is private company. first refusal? First refusal is the refusal which we are getting from the company, No, that we will not be giving you the rights. wait. A private company may, by its articles, permanently exclude these rules. यहाँ तक बात clear है? Clear. Yes, ma'am. Yeah, clear. So that there is no statutory right of first refusal. Okay. Okay. Got it. Got it. तब आप फिर बाय लॉ कुछ ऐसा आप राइट होल्ड नहीं करते कि अगर वो आपको रिफ्यूज करते हैं टू गिव दोज राइट्स. ओके, गॉट इट. First refusal over here could mean either the shareholders are refusing to purchase the shares, okay, or either I am refusing to offer you the shares, okay. It could mean either. This Okay. rule being mentioned in the articles does not give us, freedom to even go for a first refusal. मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन refuse कर रहा है नहीं कर रहा, because it's already mentioned in the articles कि मैं as a company offer नहीं कर सकती existing shareholders को, and I can directly go and offer any third person, any new party, and That's therefore right. the question of the first refusal, there is no question only about the first refusal. ठीक है, क्योंकि जब ऑफर ही नहीं किया तो रिफ्यूज किस चीज को करना है. Okay. True. Next, disapplication of preemption rights. Any company may, by special resolution, resolve that the statutory right of first refusal shall not apply. अब यहां रुकते हैं, दोबारा पढ़ते हैं. Any company may, कोई भी कंपनी ऐसा कर सकती है बाय स्पेशल रेजोल्यूशन. स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके क्या कर सकती है भाई? Special resolution pass कर सकती है with the consent. Resolve. दैट द स्टैट्यूटरी राइट. देखो स्टैट्यूटरी ये आपका हक है. अगर मैं आपको एज अ कंपनी, क्योंकि आपका प्रीएम्पशन राइट्स है, तो एज अ कंपनी मैं जो शेयर्स ऑफर कर रही हूँ, सबसे पहले मैं आप दोनों को करूंगी कि ये दोनों शेयर्स हैं और ये आप दोनों चूंकि मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो, तो आई वांट यू गाइस टू परचेज देम. नंबर 1, यू हैव द स्टैट्यूटरी राइट टू रिफ्यूज मी. मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर सकती कि आपको ही खरीदना पड़ेगा, खरीदो खरीदो. नो, you have the statutory right for refusal. You can refuse, and once you refuse, I can go and sell it to the third party. ठीक. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जगह बताया गया कि आर्टिकल्स में ही कंपनी ने लिखवा लिया है कि भाई मैं अपने न्यू शेयर्स ऑफर करूंगा ही नहीं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, मैं थर्ड पार्टी को ही जाके दूंगा. तो हमें पता चला कि ठीक है, अगर आर्टिकल्स में ये बात मेंशन्ड है तो कोई इसमें गुनाह की बात नहीं है, ऐसा हो सकता है. फिर हमें कह रहे हैं कि डिसएप्लीकेशन ऑफ प्रीएम्पशन राइट्स.
क्या कह रहे हैं कि कोई कंपनी अगर चाहे तो स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए रिजॉल्व कर सकती है, क्या रिजॉल्व कर सकती है, दैट द स्टैट्यूटरी राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल शैल नॉट अप्लाई। हाँ, अब वो कह रहे हैं कि बेटा तुम लोग के पास हक था ना रिफ्यूज करने का, अब तुम लोग के पास वो हक नहीं है। कैसे नहीं है? हम्म कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा लिया है कि मैं जब भी नए शेयर्स ऑफर करूंगा आप लोग को करूंगा और आप लोग ने रिफ्यूज नहीं करना। तो जब मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर्स ने अग्री कर लिया है तो फिर जो थोड़े से रह गए हैं जो नहीं अग्री कर रहे हैं उनके पास फिर ये राइट नहीं है टू डिसअग्री। हम्म ठीक है, सो अब ये कह रहे हैं सच अ रेजोल्यूशन टू डिसअप्लाई द राइट में ईदर बी कंबाइंड विद द ग्रांट टू डायरेक्टर्स ऑफ अथॉरिटी टू अलॉट शेयर्स। नंबर टू, सिंपली परमिट एन ऑफर ऑफ शेयर्स टू बी मेड for cash to a non-member without first offering to the shares to members on a particular occasion। तो डिसएप्लीकेशन के दो तरीके हो सकते हैं कि जहां पे आपने स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए जो शेयर होल्डर्स के पास हक था रिफ्यूज करने का वो अप्लाई अब नहीं होगा। तो कैसे नहीं होगा और किस मौके पे नहीं होगा? व्हेन इट इज कंबाइंड विद द ग्रांट टू डायरेक्टर्स, यानी डायरेक्टर्स की पावर में ये बात आई है और उनको ग्रांट किया गया है अथॉरिटी टू अलॉट शेयर्स। उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो जिससे चाहे अलॉट करें और कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है? पहला पॉइंट समझ आया? Yes, sir. सेकंड, यस मैम। सेकंड पॉइंट, सिंपली परमिट एन ऑफर ऑफ शेयर्स टू बी मेड फॉर कैश टू नॉन मेंबर। कैश पे सेल कर सिंपली आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर ही ना करें और आप डायरेक्टली किसी नॉन मेंबर को ऑफर कर दें फॉर कैश ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन, ये भी हो सकता है। तो इन दोनों सूरतों में क्या होगा, प्रीएम्पशन राइट्स डिस अप्लाई हो जाएंगे। क्या होगा? डिस अप्लाई हो जाएंगे। डिसिप्लिन। नाउ बोनस इशू, व्हाट इज अ बोनस इशू? अली पढ़िए। A bonus issue is a capitalism of the reserves of the company by the issue of the additional share to the existing shareholder in the proportion of their holdings. Such shares are normally fully paid up to with no cash called for from the shareholders. क्या बात समझ आ रही है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ राइट इशू एंड अ बोनस इशू? अली। मैम बेसिकली बोनस इशू में जो है ना लाइक कुछ पे नहीं करना पड़ता, जीरो अमाउंट होती है। राइट इशू में लाइक एज पर देयर लाइक विद होल्डिंग कुछ अमाउंट देनी पड़ती है। पे करना पड़ता है। राइट इशू यू हैव टू परचेज। बोनस और परचेज राइट बट इशू से कैश इनफ्लो होता है कंपनी के अंदर, बोनस इशू से कोई कैश इनफ्लो नहीं होता। एग्जैक्टली, ठीक है। नेक्स्ट, issuing shares at a premium or at a discount, very important, not only for F4 but your other subjects, upcoming subjects। issuing shares at a premium किसे कहते हैं? issuing shares at a discount किसे कहते हैं? अली। प्रीमियम मतलब जो ग्रेटर वैल्यू पे अगर आप सेल कर रहे हैं नॉमिनल वैल्यू से तो वो प्रीमियम है, और डिस्काउंटेड रेट अगर आप नॉमिनल से कम में बेच रहे हैं तो वो डिस्काउंटेड रेट है। राइट, अब ये पढ़ें। The Companies Act 2006 states that every share has a nominal value and may not be allotted at discount to that. क्या कह रहे हैं? कंपनी कंपनी एक्ट हमें बोलता है 2006 का कि कम में नहीं बेचना चाहिए, डिस्काउंटेड रेट में नहीं बेचना कि आपको नॉमिनल वैल्यू से कम पे नहीं बेच सकते आप, फुल स्टॉप, ये रूल है। ठीक है, अब पार्टली पेड शेयर्स किसे कहते हैं? किंजा? मैम वो कॉल्ड अप शेयर्स जो होते हैं, द 100 में से 25 पे हो चुके हैं, 25 रहते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक जैसे हम कॉल्ड अप शेयर्स बोलते हैं कि पूरा है, लिमिटेड अमाउंट हुआ है, पूरा नहीं पे हुआ है। एग्जैक्टली। अंडरराइटिंग फी, Underwriting fee, a company may pay underwriting or other commissions in respect
of an issue of shares if so permitted by its article. This means that if shares are issued at par, the net amount received will be below par value. Par value is 1.5, but the company is getting 1. That doesn't mean, of course, the company is selling it for more than the nominal value, but they are not receiving the whole amount for now. क्यों? क्योंकि उसमें एक अंडरराइटिंग फीस भी शामिल है, which is you can call it commission or a fee. Next, bonus issue. Bonus issue, the allotment of shares as a bonus issue is for full consideration since reserves, which are shareholders' funds, are converted into fixed capital and are used to pay for the shares. Bonus issue, we already know that it is not actually cash inflow and is just the reserves what we have already kept with us and now giving it to the shareholder as a capital amount. Right. Money is worth. The price of the shares may be paid in money or money worth, including goodwill and know-how. If it need to not to be paid in cash, and the company may agree to accept a non-cash consideration of sufficient value. For instance, a company may issue shares in payment of the price agreed in the purchase of a property. There is not always an exchange between a money and shares. Sometimes it is a goodwill. It can be a goodwill and other things which cannot be a monetary value, which is not a cash, but it obviously has a monetary value, but not we don't. There's not a cash inflow. Right. Ali, are all the points clear? Yes, ma'am. Okay, let's move ahead. Private companies may issue shares for inadequate consideration provided the directors are behaving reasonably and honestly. यानी कि ऐसा पॉसिबल है कि प्राइवेट कंपनीज बाज़ औक़ात अपने $100 के शेयर को 90 का बेचें, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए बेचें, एक ही शर्त पे कि अगर डायरेक्टर्स रीजनेबली और ऑनेस्टली बिहेव कर रहे हैं तो। अब इसमें सूरत हाल क्या है कि कंसिडरेशन उन्होंने कम रखी, यानी कि 100 के शेयर को 90 में रिसीव किया और साथ में कोई और गुड्स एंड सर्विसेज ले ली। This loophole has been allowed to exist because in some cases it is very much a matter of opinion whether an asset is or is not of a stated value. The courts therefore have refused to overrule directors in their valuation of an asset acquired for shares if it appears reasonable and honest. However, a blatant and unjustified overvaluation will be declared invalid. अच्छा, अब ये किस सिनेरियो में कह रहे हैं? इसमें ना जिस सिनेरियो में ये डिस्कस हो रहा है वो ये कि फर्ज करें आपके पास एक एसेट है, ठीक है, और ये एसेट कंपनी के बड़े काम का है, मगर ये है आपके पास किंजा, ठीक है। अब ये एसेट आपने फॉर सेल लगा दी है और कंपनी इंटरेस्टेड है इसको खरीदने में। कंपनी कह रही है कि किंजा बेटा हमारे कंपनी के शेयर्स ले लो, एसेट हमें दे दो, जो भी तुम्हारी एसेट की वैल्यू है ना उसी की वैल्यू के हमारे शेयर्स ले लो और हमें तुम अपना एसेट दे दो। किंजा सोच में पड़ गई, सोच रही है यार मैं कैश लूं या मैं शेयर्स लूं। अगर मैं कैश लेती हूँ तो वो तो मैं खर्च कर दूंगी, अगर मैं शेयर्स लेती हूँ तो अगेन मेरे पैसे इन्वेस्टेड ही रहेंगे और हो सकता है मुझे कैपिटल गेन हो, कंपनी तो अच्छी ही है और हाँ सही है, और मैं तो सोच ही रही थी इन्वेस्ट करने का किसी कंपनी में, तो चलो ले लिया जाए, कोई मसले वाली बात नहीं। तो किंजा ने इरादा बना लिया कि हाँ ठीक है मुझे ऑफर। फिर किंजा सोचती है नहीं यार मुझे कुछ पैसे भी तो चाहिए, तो किंजा एक ऐसा बीच का रास्ता निकालती है कि इस एसेट की मालियत 10 मिलियन है तो मुझे 1 मिलियन कैश दे दीजिए और 9 मिलियन की मुझे शेयर्स दे दीजिए, या मिक्स कर लें, आप मुझे 1 मिलियन का कैश दे दीजिए, 5 मिलियन के शेयर्स दे दीजिए और बकाया 4 मिलियन का जो है आप मुझे डिबेंचर दे दीजिए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी सेटलमेंट, कोई भी चीज जो आप और कंपनी डिसाइड कर लें, भले वो फिर कंपनी को लगे कि हाँ नहीं इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हो गई, मतलब ये एसेट की उतनी कीमत नहीं थी मगर हमने इतना पे कर दिया उसको, हमारे शेयर्स की तो वैल्यू बढ़ने वाली है, ये गलत हो गया,
या ये भी हो सकता है कि किंजा को लगे नहीं यार मैं कैश ही ले लेती, शेयर्स तो आगे गिर भी सकते हैं, ठीक है। तो अब ये भी हो सकता है कि किंजा के पास ये एसेट जो है उस ये एक बहुत यूनिक एसेट है और ये एसेट मार्केट में और कहीं इजीली अवेलेबल नहीं है, और किंजा को खुद नहीं पता कि इस एसेट का की वैल्यू क्या है, और वो मार्केट में कहाँ से पता करे, क्योंकि उसके दादाजी का एसेट था और ये तब से रखा हुआ है घर में और बहुत बेशकीमती है या बहुत यूनिक है और कंपनी इसमें बहुत इंटरेस्टेड है, उसको खरीदना चाह रही है। तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि इसकी वैल्यू का अंदाजा या एग्जैक्ट वैल्यू हम कैलकुलेट ना कर सके, तो थोड़ा कम ज्यादा 19-20 का फर्क हो। तो अब इसमें भी क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल अग्रीमेंट, अगर दोनों पार्टीज अग्री कर रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये कैरी आउट किया जा सकता है। Okay. Public companies, there are stringent rules on consideration for shares in public companies. Strict rules, stringent rules मतलब strict rules। Strict. अच्छा, अब वो strict rules कौन कौन से हैं, एक किंजा पढ़ेगी एक अली पढ़ेंगे, The पढ़िए। company must, at any time of allotment, receive at least 1/4 of the nominal value of the shares and the whole of any premium. अली। Okay, whenever the companies, sorry, Any cash, any cash consideration accepted must be independently valued. Any non-cash consideration accepted must be independently valued. Without any like biasness, it should be valued as a broad yeah. perspective. Next. Non-cash consideration may not be accepted as payment for shares in any undertaking contained in such consideration is to be or may be performed more than 5 years after the allotment. This relates to, say, a property of a business in returns of shares. To enforce the 5-year rule, the law requires that at the time of the allotment, the allottee must undertake to perform their side of the agreement within a specific period, which must not exceed 5 years. If no such undertaking is given to allottee, becomes immediately liable to pay cash or for their shares as soon as they are allotted. If the allotted later fails to perform their undertaking to transfer property at the due time, they become liable to pay cash for their shares when they default. ऑल राइट, यहाँ तक ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है, Yes, ma'am. इसमें कोई चीज समझाने वाली तो नहीं है। ओके नेक्स्ट अली। An undertaking to do work or perform services is not to be accepted as consideration. A public company may, however, allot share to discharge debt in respect of services already rendered. If a public company, against the above rule, accepts future services as a consideration, the shareholder must pay the company in cash their nominal values plus the premium treated as paid up and interest of 5% on any such amounts. वेरी इंपॉर्टेंट, क्या समझ आ रहा है इससे? कि नॉर्मली जो है ना कंसिडरेशन के बदले कोई फ्यूचर सर्विसेज आप नहीं ले सकते हैं, बट इन अ पब्लिक कंपनी फ्यूचर सर्विसेज अगर आप ले रहे हैं सो दैट शुड बी गिवन एट अ प्रीमियम कॉस्ट प्लस 5% इंटरेस्ट। रूल ये है, रूल ये है कि पब्लिक कंपनी कोई भी एसेट खरीद नहीं सकती शेयर्स के बदले, कोई सर्विस खरीद नहीं सकती शेयर्स के बदले। हाँ, अगरचे उन्होंने पहले कोई सर्विस ली है या पहले कोई प्रोडक्ट खरीदा हुआ है जिसकी पेमेंट नहीं हुई और वो चाह रहे हैं कि वो शेयर्स में पेमेंट कर दें, तो वो ये कर सकते हैं। कोई पास्ट सर्विस या पास्ट प्रोडक्ट के एवज, जो समझ लो उनके ऊपर एक डेट है, लाइबिलिटी है, उनको पे करना ही करना है हर हाल में, उसके लिए वो अलॉट कर सकते हैं शेयर्स। मगर उसके अलावा
वो फ्यूचर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि मैं तुमसे कोई डील कर लूं कि यार अली मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी, तुम मेरे कंपनी के शेयर्स ले लो, या अली तुम मुझे पढ़ा दो, मैं तुम्हें शेयर्स दे देती हूँ अपनी कंपनी के। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो नहीं हो सकता, सकता। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपको हर हाल में शेयर्स के बदले पेमेंट ही रिसीव करनी है, फुल स्टॉप। और पेमेंट का तरीकेकार क्या होगा? नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम प्लस इंटरेस्ट, ये सब चीजें होंगी। नेक्स्ट, किंजा। Within 2 years of receiving its trading certificate, a public company may not receive a transfer of non-cash assets from a subscriber to the memorandum. This is useless. This is unless its value is less than 10% of the issued nominal shares capital and it has been independently valued and agreed by an ordinary resolution. क्या किया? Within 2 years of receiving its trade, after getting, like, it's been 2 years now that I've got my trading certificate. Now I cannot receive any non-cash transfer, any non-cash asset transfer from anyone until and unless that that specific thing is less than 10% of the nominal issue, whatever my capital is. If it's less than 10%, then it's okay. Then even then it has to be independently valued, make sure everything, the value is fine. They have to go to a market and value that specific product independently and agreed by all the ordinary resolutions. If it's okay, then 10%. If it's less than 10% and agreed by everyone and independently valued, then it's fine, we can receive. Otherwise we cannot receive any transfer of non-cash payment after 2 years Exactly. has been passed. Exactly. And valuation of, again, non-cash assets, it has to be independent, it has to have a valuation report, and independent valuation rule does not apply to an allotment of shares made in the course of a takeover bid. अब इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन रूल जो है कहाँ अप्लाई नहीं होती? जब आपको अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करने हो, स्पेशली ड्यूरिंग द टेक ओवर बिड। टेक ओवर बिड किसे कहते हैं? जब हम लोग बिड्स पे The बहुत offer, सस्ते में काम कर रहे होते हैं, जब बिड्स लग रही होती हैं और हमें बहुत बिड्स लग प्रोडक्ट रही है हमें मिल किस रहा चीज होता के लिए? किस चीज के लिए बिड लग है, रही है? एक स्पेसिफिक एक कंपनी कंपनी। खरीदने के लिए या बिजनेस को खरीदने के लिए बिड लग रही है। ठीक हो गया। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम, वी नो दैट नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा अगर हम बेचेंगे तो वो अमाउंट जो एक्स्ट्रा हम चार्ज कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? प्रीमियम। एक्सेस अमाउंट इज नोन एज प्रीमियम। ओके, मूविंग अहेड। अच्छा, अब इसमें रूल भी यही है, कुछ इस तरह से है कि बिफोर शेयर इशू, okay, if a company allots £1 nominal share for £1.5 in cash, £1 per share is credited to the share capital account and 50 पैसा to the share premium account। अब इसमें सीन यही होता है कि £1 आपका नॉमिनल वैल्यू है, उसको कहाँ डाला जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट में। और जो 0.5 एक्स्ट्रा आप चार्ज कर रहे हो, इसको कहाँ डाला जाएगा? शेयर प्रीमियम। प्रीमियम अकाउंट। दिस इज द रूल। ओके, नेक्स्ट, यूजेस ऑफ द शेयर प्रीमियम अकाउंट। क्यों अलग से शेयर प्रीमियम अकाउंट क्यों खोलें? शेयर कैपिटल में क्यों ना सब डाल दें? अली पढ़िए। okay, fully paid shares are under the bonus share issue since this operation merely converts one form of fixed capital into another. Issue expenses and commission in respect of a new share issue. प्रीमियम को अलग क्यों रखा जाता है? सवाल यही है ना, क्यों रखा जाता है, क्या फायदा? ताकि मैम हम ताकि सारे एक्सपेंसेस वगैरह उससे प्रीमियम से पे कर सकें अपनी सारी चीजें। कैपिटल तो एज इट इज कैपिटल में आ जाता है, बट प्रीमियम से हम लोग सारे प्रॉफिट्स डिसाइड करते हैं प्रॉफिट्स लेटर की ऑन, कैलकुलेशन डिविडेंड्स वगैरह देते और यूजेस के लिए। प्रीमियम से हम अलग अलग चीजें कर सकते हैं, जैसे कि जब कभी हमें बोनस इशू करना पड़े शेयर, तो उसके लिए तो हमें कोई पैसे नहीं लेने किसी से भी, तो तब ये वो प्रीमियम की अमाउंट है जो काम आएगी। फिर अगर कोई इशू करने के एक्सपेंसेस हैं, कोई कमीशन है, तो वो भी इसी प्रीमियम के अमाउंट से पे ऑफ किए जाएंगे। ठीक। मैम बोनस इशू का क्या लिंक आ रहा है प्रीमियम अकाउंट से? क्लियर नहीं हो रहा।
देखो प्रीमियम क्या है, एक्सेस अमाउंट है, ये जैसे बोनस इश्यू के लिए तो पैसे होने चाहिए नहीं होते। नॉमिनल अमाउंट क्या है, बेसिक अमाउंट ऑफ द शेयर। जी प्रीमियम अमाउंट क्या है, जो एग्जैक्टली, और प्रीमियम जो एक्स्ट्रा हमें मिल रहा है। एक्सेस पैसा ले रहे हो ना, उसको आपने क्या किया, अलहदा रख दिया। क्यों अलहदा रख दिया, इसलिए रख हम्म दिया क्योंकि देखो फ्यूचर में आपको पता है कि कभी ना कभी बोनस इश्यूज भी करने पड़ेंगे, कभी ना कभी कोई और एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे, कि जब आप पब्लिक से पैसे नहीं ले सकोगे उसके अगेंस्ट में। हम्म मगर इसका तो हरगिज हम्म ही मतलब नहीं कि आप पब्लिक से पैसा नहीं ले रहे तो आपका कोई पैसा लग ही नहीं रहा, एक्सपेंस ही नहीं हो रहा। हम्म एक्सपेंस तो तब भी होगा ना, बोनस इशू यानी कि आप शेयर की प्रिंटिंग तो करवाओगे ना, शेयर दोगे ना, ओके ओके। तो फिर और तो फिर जो प्रॉफिट बोनस इशू वालों का होगा वो आप प्रीमियम से निकाल के दे रहे होगे। प्रीमियम से निकाल के आप दोगे, क्योंकि आप फिर कहाँ से पैसे लोगे, आपने जो नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो उसमें से लोगे नहीं। तो पहले से ये प्लान हुआ हम्म हुआ है कि नॉमिनल आपने खर्चा निकाल लिया, प्रीमियम जो भी अलहदा रख दिया, ताकि फ्यूचर के इस तरह के कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं तो आप इसी प्रीमियम अकाउंट को यूज करें और ये सारे खर्चे निकालें। ठीक है जी, यहाँ हमारा चैप्टर मुकम्मल है। कोई सवाल इस चैप्टर के हवाले से, एनी क्वेश्चन? नहीं मैम। अली क्लियर है? यस मैम, सिंपल है, बस वो थोड़े से वो उसके वो डिसएसोसिएशन और राइट्स वगैरह थोड़े से पढ़ने पड़ेंगे, बाकी शेयर्स की तो थोड़ी बहुत F3 से आई हुई है। ठीक है जी, 5 मिनट्स का ब्रेक ले लें, मुंह हाथ धो लें, पानी वानी पी के आ जाएं, चाय वाय ले पकड़ लें, फिर हम अपना अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, लोन कैपिटल। ओके ओके मैम, मैम। नमाज पढ़ के आए थे 10 मिनट में, ठीक है, ओके।
Hello, we are back. Are you there? Yes, ma'am. Okay, that's great. Let's start again. Loan capital. Loan capital किसे कहते हैं? जो भी कैपिटल हमें थ्रू लोन्स मिलता है. Okay. Now please remember capital. There are two sources of capital. One is called the equity and the other is called the debt capital. Equity is also known as Yes. or denoted as KE, and debt capital is denoted as KD. Okay. अब दो ही जराए हैं कैपिटल जनरेट करने के. या तो आप शेयर्स मार्केट में फेंको और पब्लिक से पैसा उठाओ, या फिर आप रिश्तेदारों से, बैंक से, किसी भी बड़े इदारे से, इंस्टीट्यूट से, किसी बड़े अमीर बंदे से, वेंचर कैपिटलिस्ट से लोन लो, उधार लो. तो ये दो ही तरीके हैं जिसके जरिए आप कैपिटल जनरेट कर सकते हैं फॉर योर बिजनेस, फॉर योर कंपनी. हमने शेयर्स के बारे में, इक्विटी कैपिटल के बारे में सारी बातें कर ली हैं तकरीबन. अब हम इस चैप्टर में डेट कैपिटल के बारे में तमाम गुफ्तगू करेंगे. Okay. Borrowing, debentures and loan capital, charges, registration of charges, debenture holders, remedies. अली, आप हैं या नमाज लंबी चल रही है? चलेंगे, हम कंटिन्यू करते हैं. हम इसमें से बहुत क्विकली गो थ्रू करेंगे किंसा, क्योंकि काफी सारी टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ चुके हैं. बोरोइंग किसे कहते हैं? वी ऑल नो. Borrowing. ठीक है. Yes. A contract to repay borrowed money may in principle be unenforceable if either. Point to be noted. Point to be noted. क्या क्या बात हो रही है? क्या बात हो रही है? मुझे पीना है ना. A contract to repay borrowed money. आपने बोरो किया पैसा और अब आप उसको रीपे करना चाहते हो, तो उसको रीपे करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो बुनियाद है वो जरूरी नहीं कि एनफोर्सेबल ही हो. यानी कि कोई आपसे जबरदस्ती आपका गिरबान पकड़ के आपसे लोन वापस ले. देयर आर सिचुएशंस के जहां पे, दैट मींस देयर आर एक्सेप्शंस के जहां पे आपसे कोई आपका गिरबान पकड़ के लोन वापस नहीं ले सकता. और वो कौन सी दो सिचुएशंस हैं? वो ये दो सिचुएशंस हैं. यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं. अली पढ़िए. It is money borrowed from a ultra wires or restricted purpose, and this is known to the lender. नंबर 1, उस सूरत हाल में आपका लोन रीपे करने गिरबान नहीं पकड़ सकता जब आपने लोन लिया हो एक अल्ट्रा वायर पर्पस के लिए. ना, व्हाट इज अल्ट्रा वायर? एक रिस्ट्रिक्टेड पर्पस, एक ऐसा काम जो आपको इजाजत ही नहीं है. चाहे आपके आर्टिकल से इजाजत नहीं मिली, चाहे स्टेट आपको इजाजत नहीं दे रही, आपको इजाजत ही नहीं है वो काम करने की. तो आपने उसके लिए पैसे कैसे लिए? जब आप पैसे लेंगे तो रीपे, जो बंदा चाहता है कि आप रीपे करो, वो आपका गिरेबान कैसे पकड़े? क्योंकि वो आपको कोर्ट में नहीं लेके जा सकता, क्योंकि इलीगल काम है, कि गैर कानूनी काम है. नेक्स्ट, जब भी हम लोग बोरो करते हैं देन वी मेक श्योर दैट वी टेल ईच एंड एवरीथिंग टू द बैंक कि हम लोग ये स्पेसिफिक अमाउंट कहाँ पे स्पेंड करें, या रैंडमली हम जहाँ चाहें कर. आप भले ना बताओ मगर वो पर्टिकुलर काम लीगल काम होना चाहिए. वो पर्टिकुलर बट काम बैंक ने तो मुझे दे दिया, बैंक का तो प्रॉब्लम नहीं है वो लीगल है या नहीं. नहीं, क्यों प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल प्रॉब्लम है. बैंक मगर आप, बैंक मुझे कैसे लुक आफ्टर करे. देखो मेरी जान, जो भी आपको पैसा दे रहे हैं उसका तो कोई मसला नहीं. आप किससे लोगे पैसा? या अपने वालिदैन से, या अपने किसी रिश्तेदार से, चाचे मामे से, या अपने किसी फ्रेंड से, किसी कजन से, या फिर आखिरी ऑप्शन क्या बचता है? बैंक से. बैंक. तो ये पांचों लीगल सोर्स हैं, ये पांचों जायज हैं. इन पांचों से आप ले सकते हो लोन, लेकिन उस लोन का इस्तेमाल या उस लोन का मकसद वो क्या है
Are you allowed to spend money on buying smuggled items, on buying such weapons which you don't have authority to purchase, No. right? नहीं, but Ani, I'm just asking कि अगर if I am misusing the money, so as you just said कि बैंक जो है वो फिर मुझे legally नहीं लेके जा सकता क्योंकि मेरा पैसा is not being used properly. तो मैंने एक्चुअली वो बैंक की तो गलती नहीं हुई कि मैं वो पैसे कहाँ, तो दैट मीन्स कि बैंक जब भी हमें पैसे देता है तो बैंक ऑब्वियसली चेक करता होगा कि वेयर आर वी एक्चुअली यूजिंग दैट स्पेसिफिक अमाउंट. बिल्कुल, बैंक के बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन होता है कि आपको लोन का पर्पस क्या है, व्हाट्स द पर्पस ऑफ योर लोन, यू हैव टू फिल इन दैट फॉर्म, यू हैव टू फिल या इन दैट फॉर्म. एंड अगर उसके बावजूद भी आप किसी अल्ट्रा वायलेंट काम में फंस गए तो फिर जाहिर है फिर बैंक भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है. क्यों रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि ही डिड नॉट इन्वेस्टिगेट इट प्रॉपर्ली, उसको शक नहीं हुआ, या उसने सारी डिटेल्स चेक नहीं की, क्या किया. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट. बेसिकली अगर छोटी अमाउंट है तो शायद कोई उतना गौर नहीं करे, लेकिन अगर आप बड़ी अमाउंट ले रहे हो और बड़ी बड़ी अमाउंट के साथ ये सब हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं जो आपका लेंडर है वो भी रिस्पॉन्सिबल इसमें चेन में फंसेगा, इन्वेस्टिगेशन में फंसेगा. ठीक है जी. नेक्स्ट, द डायरेक्टर्स एक्सीड देयर बोरोइंग पावर्स और हैव नो पावर्स टू बोरो. अब एक और चीज होती है जिसको कहते हैं मैक्सिमम लिमिट ऑन बोरोइंग. या ये मैक्सिमम लिमिट क्या है कि भैया किंजा जो है ना, किंजा किंजा को मुझे कोई बोल रहा है कि मैम अगर आपको किंजा को लोन देना है ना 2 लाख से ज्यादा नहीं दीजिएगा. क्यों? क्योंकि वो जॉब करती है, वो शायद आपको पे बैक नहीं कर सके. तो 2 लाख इज द मैक्सिमम अमाउंट विच यू शुड बी गिविंग टू किंजा एज इफ यू वांट टू लेंड मनी. लेकिन कोशिश कीजिएगा उससे कम ही दें, उससे ज्यादा ना. तो इसी तरह ठीक. बैंक भी हर किसी को बहुत ज्यादा लोन नहीं दे देती, उसका पूरा पीछे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, सब चीजें देखती है. एग्जैक्टली. उसका वो बैंक पे बैक कैसे करेगा, कितना कर सकता है. कैसे करेगा, किस हद तक कर सकते हैं, एंड वो सब देखने के बाद क्या लगाया जाता है, मैक्सिमम लिमिट. भाई इससे ज्यादा आपको हम लोन लेंड नहीं कर सकेंगे, हमें इजाजत नहीं है एट वन टाइम. इसी तरह डायरेक्टर्स पे भी ये मैक्सिमम लिमिट लगाई जाती है कि आप नहीं बोरो कर सकते अपने नेम पे, क्योंकि देखो हर इंसान की क्रेडिबिलिटी होती है. ठीक है, मैं ईशा जुबैर, आई हैव अ क्रेडिबिलिटी, आई हैव अ सेंस ऑफ अथॉरिटी. लोग मुझे देखकर अंदाजा लगाते हैं कि हाँ ये बंदी पे भरोसे लायक है या नहीं है. इसी तरह सी का अपना एक और है, किंजा का अपना एक और है, और इसी तरह हर इंसान का अपना एक और है. तो हर और डायरेक्ट उसके अलावा भी डायरेक्टर्स की जब बात आती है, इफ दे हैव लाइक 51 मोर देन 51%, तो दैट मींस कि दे आर द मेन ओनर्स. तो एट टाइम्स उनको इसीलिए भी नहीं दिया जाता अथॉरिटी, सो दैट वो ज्यादा शेयर के होल्डर्स को मिसयूज नहीं अपनी पावर को. मिसयूज नहीं करें. और यहाँ पे खुसूसी तौर पे बोरोइंग की बात हो रही है तो डायरेक्टर्स को भी एक हद तक इजाजत है कि आप बोरो कर सकते हो, या आप अपने नाम पे कंपनी के लिए बोरो कर सकते हो, उससे ज्यादा. ओके. ठीक है. नेक्स्ट, however in both cases the lender will probably be able to enforce the contract. ऊपर जहां बात हो रही है कि अनएनफोर्सेबल इन दोनों सिनेरियो में, तो वहां यह बात हो रही है, लेकिन फिर भी चूंकि हकीकतन लेंडर का तो कसूर नहीं है उतना, तो इसलिए वो फिर भी एनफोर्स कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को. If the contract is within the capacity of the company but beyond the delegated powers of directors, the company may ratify the loan contract. अगर तो वो कंपनी के उसमें है, अगर डायरेक्टर्स ने वो क्या उसका वर्ड यूज करते हैं, टू क्रॉस योर लिमिट्स, अल्ट्रा वायर्स, अल्ट्रा वायर्स. अगर तो आप अल्ट्रा वायर्स नहीं कर रहे, आपका डायरेक्टर अपने लिमिट्स में रहकर काम कर रहे हैं, अपने लिमिट्स में रहकर उसने लोन लिया है, तो फिर तो वो कंपनी उसकी का भी कैपेसिटी. फर्ज है कि वो मतलब उसको पे बैक करे, वो लोन हेल्प आउट करे. मगर अगर डायरेक्टर हैज अब्यूज्ड हिज पावर, हैज क्रॉस्ड हिज लिमिट्स, then the company may ratify the loan contract. ratify मतलब मना कर देना कि भाई मैं तो सॉरी, हम इसे वेरीफाई नहीं करते, हम इसे कंफर्म नहीं करते. उसकी मर्जी ओके. में आ जाता है कि वो उसको लोन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करे या ना करे. ठीक है जी. नेक्स्ट, पर्सनल गारंटीज.
We have done this. Can any one of you remember what is a personal guarantee? जब भी हम रेफरेंस दे रहे होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी चीज में, जैसे like for example if someone is I am sponsoring someone, so obviously I am the one who is being I'm giving all the my financial statements to that specific person, so it's my personal guarantee of it. Somebody knows me well, maybe my father, my parents, and my someone knows me well, so they're just giving the other person their own guarantee that it's okay, I know this person on a personal basis. पर्सनल गारंटी यानी कि आई नो दिस पर्सन, रेफरेंस कह लें, ठीक है? Watching for someone. यस। डिबेंचर्स एंड लोन कैपिटल हम अगेन डिस्कस कर चुके हैं, debentures किसे कहते हैं, लाइक अ शेयर, ओनली द डिफरेंस इज कि शेयर के बदले आपको इक्विटी कैपिटल मिलता है, डिबेंचर के बदले आपको लोन कैपिटल मिलता है। डिबेंचर स्टॉक किसे कहते हैं? इट्स अ लार्ज नंबर ऑफ लेंडर्स subscribe to and by a large number of lenders. Only this form requires a debenture trust deed, although the others may often. मैम डिबेंचर्स और लोन में क्या डिफरेंस होता है? डिबेंचर्स और लोन में बहुत ही जबरदस्त फर्क होता है। लोन लेने के लिए, चाहे वो बैंक से ले रहे हो या इंडिविजुअल से ले रहे हो, उसके लिए बकायदा कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है? उसके लिए बकायदा कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट बनाना पड़ता है कि मैं सो एंड सो फलाने शख्स से लोन ले रहा हूँ 1 लाख का, इतने इंटरेस्ट अमाउंट पे, और इस वादे के साथ कि 2 साल बाद इसको पूरी प्रिंसिपल अमाउंट पे करूंगा। ओके, साइन, ठीक है? नाउ डिबेंचर क्या है? डिबेंचर रेडीमेड, जैसे कि शेयर, $100 का शेयर, $10 का शेयर, वैसे ही डिबेंचर 10,000 का शेयर, 10,000 का डिबेंचर, $10 का डिबेंचर, $20 का डिबेंचर, $200 का डिबेंचर, ये रेडीमेड हो गया, ठीक है? आप गए मार्केट में, आपने $200 का डिबेंचर उठा दिया, $200 दिए और आ गए, या $200 का डिबेंचर आपने साइन किया, आपने पैसे लिए, और वो मतलब वो डिबेंचर इज अ रेडीमेड अग्रीमेंट। मगर वो फिर शेयर होगा वो तो, बट ये कि जब प्रॉफिट एंड लॉस में डिबेंचर वाले का शेयर नहीं होगा, दैट्स जस्ट अ लोन। एग्जैक्टली, और डिबेंचर को डिविडेंड्स भी नहीं मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? डिबेंचर्स में तो जिस बंदे के पास डिबेंचर है फिर वो मुझे क्यों देगा उसको डिबेंचर पे? वो मुझे क्यों लोन देगा अगर उसका कोई बीच में बेनिफिट ही नहीं है? शेयर होल्डर तो प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है, समझ आती है, बट डिबेंचर होल्डर जो है वो अगर मेरा डिबेंचर ले रहा है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, फिर उसको क्या फायदा है? उसको फायदा है ना, इंटरेस्ट तो मिलेगा ना। अच्छा, Percentage इंटरेस्ट of स्पेसिफिक interest अमाउंट देना। on the इंटरेस्ट loan. इंटरेस्ट भी ओके मिलेगा और लोन भी। वो ये इसमें और लोन कॉन्ट्रैक्ट में बस एक ही फर्क है कि ये रेडीमेड है और कॉन्ट्रैक्ट जो है प्रॉपर बनता है, ओके ओके, ठीक ठीक है? है। और प्लस इसमें ये भी है कि डिबेंचर में क्या, ये एक और फायदा ये भी है कि अगेन इट्स ट्रांसफरेबल, ओ यस। ठीक है? यू कैन ट्रांसफर इट। तो ये एक सूरत हाल हो जाती है, ये एक बेनिफिट हो जाता ओके। है। किंसा, कैन यू प्लीज रीड दिस डेफिनेशन? A debenture is the written acknowledgement of a debt of a company by a company, normally containing provisions as a payment of interest and the terms of repayment of principal. A debenture may be secured on some or all of the assets of the company or its subsidiaries. एंड इसमें एक और फर्क ये भी होता है कि डिबेंचर यहाँ इशू कौन कर रहा है? कंपनी इशू कर रही है। शेयर कौन इशू कर रही है? Hmm. कंपनी इशू कर रही है, ठीक है? Hmm. और कंपनी को शेयर कैपिटल दे कौन रहा है? पब्लिक दे रही है। Public. Debenture कंपनी भी को public. डिबेंचर कैपिटल या लोन कैपिटल दे कौन रहा है? पब्लिक दे रही है। Okay. That's right. अली के पास 1 लाख रुपए रखे हैं और अली चाह रहा है इसको मैं इन्वेस्ट कर दूं, तो अली ने सोचा कि चलो मैं इस फला कंपनी को 1 लाख का लोन दे देता हूँ, जो मुझे 1 साल बाद मिल भी जाएगा वापस, और मेरी 1 साल की इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी और थोड़ा ऊपर इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। तो अली ने सही से। अपने 1 लाख से क्या किया? डिबेंचर खरीद लिया। मेरे हम्म। पास क्या आ गया? एज अ कंपनी मेरे पास पैसे आ गए, मैंने तुम्हें डिबेंचर दे दिया। डिबेंचर यानी प्रूफ हो गया कि भाई मैंने तुमसे पैसे उधार लिए Actually, और मैं तुम्हें इंटरेस्ट के हम्म। साथ वो पैसे 1 साल बाद वापस करूंगा, जब भी तुम वो डिबेंचर मेरे पास वापस नहीं कराओ,
ठीक है, अब अली ने 6 महीने बाद ही अली ने सोचा नहीं नहीं मुझे तो अपने 1 लाख वापस चाहिए, मगर डिबेंचर तो 1 साल बाद मैच्योर होगा। तो हम्म। अली ने क्या किया, अली ने 6 महीने बाद ही अपने किसी दोस्त को वो डिबेंचर सेल ऑफ कर दिया और अपने 1 लाख रुपए निकाल लिए वहां से। ओके। अब उसका दोस्त जो है 6 महीने बाद जब वो डिबेंचर मेच्योर हो जाएगा तब वो कंपनी के पास जाएगा और 1 लाख जो लोन है वो लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ले लेगा। ओके। ओके ठीक। ठीक है, नाउ ओवर हियर व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज दिस टर्म नोन एज डिबेंचर स्टॉक। अब होता ये है कि समटाइम्स इट हैपेंस कि देर इज अ प्रोजेक्ट एंड एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए कंपनी को लोन चाहिए। तो उस प्रोजेक्ट के नाम पे कंपनी इज गोइंग टू इशू डिबेंचर स्टॉक। अब उनको पता है कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 50 मिलियन और 50 मिलियन हम्म। डेफिनेटली एक बंदे के पास तो नहीं होगा। तो दे ट्रू। विल ओपन द डिबेंचर स्टॉक फॉर द एंटायर पब्लिक, फॉर द एंटायर नेशन। कहीं से भी हम्म। कोई से भी आए, जितने का भी डिबेंचर खरीदे, एंड दिस विल ऑल फॉर्म अ पार्ट ऑफ वन डिबेंचर स्टॉक। क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए रेस किया गया अमाउंट। ओके। एंड इस डिबेंचर इस फॉर्म में there is a debenture trust deed as well which is signed. ओके। ठीक हो गया? I hope this makes it clear. And then they state one more important thing, that a debenture may be secured on some or all of the assets of the company or its subsidiaries. यानी एक डिबेंचर हम्म। सिक्योर भी हो सकता है और अनसिक्योर भी हो सकता है। दोनों बातें आ गई। अगर सिक्योर है तो कुछ एक आधा एसेट पे सिक्योर होगा या फिर एंटायर एसेट ऑफ द कंपनी में सिक्योर हो सकता है, बोथ वेज। हम्म। अली ठीक। प्लीज रीड दिस लाइन। Debenture may create a charge over the company's asset as a security for the loan. However, a document relating to an unsecured loan is also a debenture in the company law. क्या कह रहे हैं? कि ये किसी कंपनी के एसेट्स के ऊपर भी ले दे से इशू हो सकता है और विदाउट दैट अनसिक्योर्ड भी हो सकता है इशू। A debenture may create a charge मतलब security over the company's assets as a security for the loan. ठीक है भैया, समझ आ रही है ना ये वाली बात कि भाई तुम लोन लेके भाग ना जाओ, तो या श्योरिटी के कंपनी लिए का कुछ रखा दिवालिया ना निकल जाए, तो पब्लिक को भरोसा दिलाने के लिए उस डिबेंचर को सिक्योर किया जाए कोई ना कोई एसेट के साथ कनेक्ट करके, हम्म। कि in case company goes bankrupt, in case company becomes a defaulter, the person can go and sell off that asset and get his money back. However, a document relating to an unsecured loan is also a debenture in company law. Of course, अगर unsecured loan भी है तो भी वो debenture ही कहलाता है। एंड इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि कंपनी को फिर कोई छूट मिल जाएगी कि वो पे ना करे क्योंकि वो secured नहीं है। No, the company has to pay back that loan. Only difference is it's not secured at the time of default or something. It may happen that they are not left with any cash to pay back. But of course, they will be finding out some ways because क्योंकि इंसाफ का निजाम है, सू का सिस्टम है, कोर्ट सिस्टम है, तो कहीं ना कुछ तो कंपेंसेशन होगी ही होगी। हम्म। Types of debenture: single debenture issued at series, issue of debenture stock, and that's all. डिबेंचर ट्रस्ट डीड फॉर डिबेंचर स्टॉक, ये भी हम पढ़ चुके हैं, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। हम्म। एडवांटेजेस ऑफ अ डिबेंचर ट्रस्ट डीड फॉर डिबेंचर स्टॉक, इसका फायदा क्या है? जाहिर है सिक्योरिटी बेहतर है, हम्म। रिप्रेजेंटेशन है, मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स है, सारे तमाम डिबेंचर होल्डर्स के नाम होंगे और इजीली वो कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। Next, register of debenture holders. Of course, a company must maintain a register of debenture holders where the names and address is mentioned. Register must be open to inspection by any person. Under Companies हम्म। Act, a company has 5 days to respond to an inspection request or seek exemption to do so from the court. Important. This is a rule. कि 5 दिनों, अगर मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ कि भाई मुझे रजिस्टर देखना है डिबेंचर होल्डर्स का, बीइंग एन ऑडिटर, हम्म। बीइंग अ शेयर होल्डर, बीइंग मे बी एनी XYZ पर्सन,
who is concerned about the matter and who is related to the matter. तो within 5 days कंपनी को रिस्पॉन्ड करना है मुझे, या तो वो रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्ड दिखाए या फिर वो कोर्ट से एग्जेम्पशन ले ले कि सॉरी हम तो नहीं दिखाना चाहते, तो माफी. So the register should be properly kept in accordance with requirements of the Companies Act. Rights क्या है डिबेंचर होल्डर के? I give you 5 minutes, go through this, that what are the rights of a debenture holder, and then आप लोग मुझे explain कीजिएगा, and also keeping in mind in comparison with the rights of the shareholder. Shareholder के rights क्या है, debenture holders के rights क्या है? Go ahead.
G. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Kenza. Start. Okay. The first thing is that they are uh, the role. If you talk about the role, the shareholders are the owner of the company. They are actually investing in the company, and debentures are the creditors of the company. Okay, They are actually lending the money. that's it. That's number one. Shareholders are Mm. owners. The debenture holders are creditors. Creditors. Creditors, Yeah. Now, Ali. fundraisers. Ali. B. Voting rights. Debentures have no rights, whereas shareholders have rights. Have rights. Okay. Shareholders have rights because they are owners, and debenture holders have no rights because they are lenders. Yes. Shareholders not always, but they may have voting right. Not always. Some of the shareholders does not have voting rights. Hmm. You Okay. can say. Next point. Kenza. Cost of investment. The share cannot be issued, as we discussed earlier. They cannot be issued at a discounted or to discounted to nominal price. The minimum value should be nominal. But if you talk about debentures, they can be offered as to for a discounted to nominal value. Right. Next. Returns. Returns. Dividends are only paid when all the expenses are like cleared and given, whereas the interest is a must given thing. Like you have to pay first interest and then the rest of the thing. Right. Next. Redemption. If we talk about shareholders, there are strict restrictions there are state restrictions for redeeming shares. If you want to take the shares back, we have to first make sure that are they redeemable or not. But if we talk about debentures, there is no restrictions. We can get the debentures back whenever we want. And what does it mean, redeemable? To get our shares back to the company, if we want to take our shares back, we The can take company them. will We can take the take the shares back, or the company will yeah. take the debentures back. Okay. That's right. Liquidation. Next. Ali. Liquidation basically, ma'am, they have a leverage. The debenture people have the leverage that they are when the liquidity is placed, they are paid first, and then whatever is what the rest thing are left, then the shareholders are paid Right. while winding up. Right. Except for preference shares. Preference shareholder, yeah. Okay. Okay. From the investor's standpoint, debenture stock is often preferable to preference shares. Although both yield a fixed income, debenture stock offers greater security. Yeah. Why do you think that investor feels greater security in purchasing or investing in debenture stock rather than preference shares? Because Uh, when the company is winding up, first the the debenture holders will get the money, and then later preference shares hold. Exactly. Exactly. Okay. So I hope it is clear now. Both own transferable company securities, which are usually long-term investments in company, issue procedure is the same. Procedure for transfer of registered shares and debentures is the same. So these are the kind of the rights or commonalities between. Mhm. Yeah. Okay. Moving ahead, advantages, disadvantages. This you can go through yourself. Charges. What are charges? Charges, we know that it's a security. So let's read and Mhm. clarify. Ali. a charge over the asset of a company gives a creditor a prior claim over the creditors to the payment of their debt out of the assets. यहाँ तक बात समझ आ रही है? Charges. Yes, ma'am. Kinza, next. Hmm. Charges may be either fixed, with attached to the relevant asset on creation, or floating, which attached on crystallization. For the reason it is not possible to identify the asset to which your floating charges relate until crystallization. Sometimes the charges are fixed. Like for example, this is a machine, and the charges are if you want if you have to claim 10% or maybe 10,000.
but sometimes it's floating because of depreciation. It happens that the value of the thing, the main asset, keeps on changing. So that is why sometimes it's a floating charge, because until and unless it's crystallized, then they get to know what is the real value. Okay, let's understand what's the difference between fixed and floating. Ali, fixed. पढ़ो और समझाओ. A fixed charge is a form of protection given to the secured creditors relating to the specific asset of the company. Okay. The charge grants the holder the right of enforcement against the identified asset in the event of default in repayment or some other matter. So the creditor may realize the assets to meet the debt owed. Fixed changes rank first in order priority of liquidation. क्या-क्या points निकाल? बेसिकली एक कुछ खास एसेट्स होते हैं कंपनी के जिस पे ये फिक्स चार्ज हम होल्ड करवाते हैं. Okay, वो number किसके one, लिए लाइक specific एज assets. अ Number one, specific assets. Then नंबर 2 इज बेसिकली होल्डर्स को राइट्स देने के लिए जो कि होते हैं किसी भी चीज के, और ये यूज तब होते हैं जब हम लिक्विडेशन पे आते हैं, तो वो प्रायोरिटी वाइज पे वो लिक्विडिफाई करते हैं अगर डेट हम नहीं पे कर सकते तो. अगर डिफॉल्ट हो जाती है कंपनी इन द डिफॉल्ट हो जाते हैं उस सूरत में प्रायोरिटी वाइज के पहले ये जाएगा फिर ये जाएगा फिर ये जाएगा. एग्जैक्टली. नेक्स्ट, किंजा फ्लोटिंग चार्ज. A floating charge has been defined in case law as a charge on a class of assets of a company, present and future, which class is the ordinary course of a company's business, changing from time to time. And until the holder enforce the charge, the company may carry on business and deal with the assets charged. क्या समझ आ रही है बात? ये मैम के उसमें जो भी charge है that keeps on changing. The present value is sorry, जो भी asset है, it keeps on changing the value. The present value is different, and a future value sometimes the future, just I mentioned earlier, due to this depreciation, the future, the prices, the things are changing up, so it's going to be a little different. And the other point, number 2, is ordinary course of the company's business changing from time. Which class? Maybe the preference, sometimes the machinery is very important to the business, and later we're getting the other machineries as well. So it depends. Like, for example, if you are first paying a lot of amount on one of the machinery, and then later it is not that in demand due to technology, new machineries are coming in. So obviously the charge is going to be different now. So it will float. Number 3 is until the holder enforce the charge, the company may carry on. Okay, they are saying that until and unless the holder, whoever is expecting the charges, until and unless he is okay with it, it's fine. The company will just carry on with the same amount. But when he will be concerned about it, then the business will have to look into it and change the floating charges. ओके जी, अब इसको एक और एंगल से समझ लें. जो जो बातें अली ने कही, जो जो बातें किंजा ने कही, सब सही है, सब सही है. अब इसको थोड़ा सा just tally it with the statements I'm going to give. Fixed charge is secured upon specific assets which are usually non-current asset. Okay, and when there is a fixed charge on this non-current asset, the company cannot deal in it. Deal, that means it cannot sell it to XYZ%. It cannot just give it on lease. It cannot. It has to use it. If the company is using it, then okay, they keep on using it. Otherwise, they can't just go and sell it off anywhere. Okay. Unless they pay back to the credit holder, the debenture holder, and they release it from the fixed division. Okay. Done? Now, floating charge is usually on those class of assets which are considered to be current assets. Now, current floating charge on current assets means that the holders, the number 2 point, the company can carry on the course of business. अब current asset है तो inventory होगी कहीं ना कहीं. Exactly. Inventory तो sell भी होगी, inventory manufacture भी होगी, inventory defect भी होगी, inventory expire भी होगी.
एक flow में चल रही है, So changes आ रही that is allowed. That is allowed. हैं. That is allowed, but then of course if a certain set of inventory has been sold away, so then the floating charge, that's why it is called floating charge, because वो goods चले गए तो वो floating charge अब दूसरे current assets पे है, जो inventory मौजूद है warehouse में, जो manufacture हो चुकी है, जो रखी हुई है. The amount is what matters. 1 million की amount है अगर, तो वो 1 million का ही current asset या floating charge उस पे होगा. अब वो current asset वो पुराना बिक गया, नया आ गया, business can do it, it's allowed, unless the debenture holder or the creditor who has this floating charge crystallizes this charge. जैसे ही वो क्रिस्टलाइज कर देगा, वो बोलेगा बस तुम लोग डिफॉल्ट कर रहे हो, मेरे पैसे नहीं दे रहे हो, अब बस अब मैं आ रहा हूँ अपना एसेट लेने के लिए, तो अब वो सेल नहीं कर सकते, अब वो उसको कुछ टच भी नहीं कर सकते, अब जो है वो एज इट इज उनको छोड़ना होगा. ठीक है, बात क्लियर हो रही है, समझ आ रही है? Yes, ma'am. Now see, you can see over here, a floating charge is not restricted to assets such as receivable or inventory. A floating charge can be any other asset as well. But what did I say? Usually it is a current asset. This class of Okay. asset is current asset. Usually the fixed charge is on non-current asset. Okay. Identification of charges as fixed and floating. Okay, this you can go through it yourself. Charge over receivables. Now, what is this charge over receivables? By name, what do you understand? Charge over, Like basically, if you're well, selling anything on cash, then of course it's okay. But if I'm giving any credit, I'm giving my customers that okay, you can pay later. My receivables are increasing, so obviously there's a charge. I will be giving like on a more amount, and plus on the other hand, bad debts can also come up. So both kind of a charges for me. No. बेटा जब भी ये charge का word आए ना, you have to consider it as a security. Okay, it's a Oh, security. Now over here there was a statement, I don't know you noticed it or not. A floating charge is not restricted to assets such as receivable and inventory. What did I say? That usually a floating charge is on the current asset. So a current asset is an inventory, yes or no? A current asset is also yes, a receivable. Okay. yes. So how receivable? Receivable तो मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं है. अभी तो उधार पे दिया हुआ है सामान, पैसा तो फ्यूचर में आएगा. Hmm, You are maintaining a true. book. You are maintaining a register of receivables or a statement of receivables. That इतना पैसा आपका Hmm. हक है कि आप मार्केट से उठा सकते हो. It's your right. This belongs to you. But right now you just have a paper for it. You don't have the cash. So you can give your creditors charge over this books of receivable. Okay, this, if in case I am unable to pay you, what you can do, you can own this book of receivables, you can own the evidences, and I give you the right to go and collect the cash from the market. This 2 million cash I have, it's mine. This 2 million cash that I have to collect from the market, from different people. So you can get this right. So your loan that you are giving to me is secured by this book of receivables. This is called charge over receivables. Okay, I hope it's clear. Okay. There is Yes, ma'am. one more word which I don't know, will be coming across sooner or later. Factor. Do you know who's a factor? inflation factor, Who is a factor related to the receivable case? inflation rate, Factor is a person. मैं company हूँ, ठीक है, and I have this book of 2 million receivables. I have tried all the methods to get back this money from the market,
but I am unable to do so. Why? Because जो मार्केट में लोग बैठे हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं यार. मिस रमशा, कैन यू प्लीज disturbing the class. So 2 million book of receivables I have to collect from the market, and I as a company am unable to do so. Why? Because of so many reasons. Maybe the people are, दहशतगर्द बैठे हुए हैं, हक नहीं दे रहे, भत्ता खो रहे, ये वो whatever. ठीक है. So now this 2 million of people, this 2 million rupees, what will I do as a company? I have two options. Option number one, I give up. I surrender, I give up. I say, okay, fine. 2 million मेरे बर्बाद, bad debt. लिख दो bad debt. नहीं recover कर सकती मैं. One option. Option number two, I keep on approaching those people. And they keep on shooing me away. That's number two. And then there is a third option, that I hire a factor. I hire a person whose job is to collect the receivables from the market. उसको तरीका आता है लोगों से पैसे निकलवाना, उसका काम ही यही है. उसको हम ये बुक ऑफ रिसीवेबल पकड़ाएंगे और वो बंदा मुझे 2 मिलियन दे देगा. 2 मिलियन तो नहीं देगा, 1.5 मिलियन देगा. वो बोलेगा 0.5 मेरी फीस. Yes. मेरी फीस, वो 1.5 मुझे मिल गए, मैं खुश, मुझे पैसा मिल गया. अब वो फैक्टर जाने, वो मार्केट जाने, फैक्टर के पास किताब है, वो जाके किस तरह कलेक्ट करे मार्केट से, वो उसका हेडेक है, उसका टेंशन है. वो मेरा टेंशन ही नहीं है. ठीक है. सो दीज आर द 3 ways in which this can be. अब ये फैक्टर वाली कहानी आप लोग कभी ना कभी तो पढ़ोगे कहीं ना कहीं. अच्छा जी, नेक्स्ट, creating a floating charge. Again we have done it. Crystallization of a floating charge. Floating charges crystallize or harden on the happening of a certain relevant events. अब वो certain relevant events can be anything. Maybe the passing of the date, कि इस डेट पे पैसे मिल जाने चाहिए थे, वो डेट गुजर गई तो अब बस चार्ज क्रिस्टलाइज हो गया. या फिर अनाउंस कर दिया, बोल दिया मैं आ रहा हूँ, अपने पैसे लेने के लिए तैयार रखो. ठीक. नेक्स्ट, events causing crystallization. Kinza, quickly, what are the events The, that liquid, cause crystallization? the liquidation of the company, cessation of the company's business, active intervention by chargee, generally by way of appointing a receiver. If the charge contract so provides, when notice is given by the chargee that the charge is converted into fixed charge, or whatever asset of the relevant class are owned by the company at the time of the giving notice, the crystallization of another floating charge if it caused the company to cease business. ठीक हो गया. ये सारे वो इवेंट्स हैं कि जब जब आपका फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज हो सकता है. कंपैरिजन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग चार्जेस. Comparison, again, you can go through it yourself. I think we have understood it pretty well. Priority of charges, of course, the fixed charge first. Now this is the priority table. Okay, this is important. Ali, priority क्या है? पढ़िए. Fixed charges rank according to the order of their creation. If two successive fixed charges over the same factor are created on 1st January and 1st February, then the earlier takes the priority over the later one. A floating charge created before a fixed charge will only take priority if, when the later was created, the fixed charge had notice of a clause in the floating charge that prevents a later prior change. A fixed charge created before a floating one has priority, and two floating charges take priority according to the time of creation. So एक बात जो सामने निकल के आ रही है वो क्या आ रही है?
कि प्रायोरिटीज हमेशा एक नहीं होती कि हमेशा फिक्स को ही नंबर 1 पे मिलेगी। एट टाइम्स फ्लोटिंग को भी नंबर 1 पे मिल जाती है, वो सिनेरियो पे डिपेंड करता है। तो टाइम ऑफ क्रिएशन पे डिपेंड। हम्म। ठीक है, द टाइम फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। या कि पहले कौन सा चीज बनी थी और डिसाइड हुई थी, तो वो चीज प्रायोरिटी होती है। Exactly. Next, negative pledge clause. What is a negative pledge clause? Ali. A floating charge holder may seek to protect themselves against losing their priority by including the term of their floating charge a prohibition against the company creating a fixed charge over the same property, sometimes called a negative pledge clause. क्या कह रहे हैं? बेसिकली वो अपने प्रोटेक्शन ले सकता है फ्लोटिंग चार्ज होल्डर ये फिक्स लॉस लगा के कि जिसको हम नेगेटिव क्लॉज भी कहते हैं किसी भी फिक्स एसेट पे लगा के, तो उससे क्या होगा, प्रोहिबिशन आ जाएगी कि जो है ना इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। एग्जैक्टली मतलब अगर एक एसेट है जिसपे एक बंदे ने फ्लोटिंग चार्ज लिया हुआ है एंड देन द सेम एसेट इज बीइंग यूज्ड बाय द कंपनी टू गिव अ फिक्स्ड चार्ज टू somebody else, then that person who the floating chargee can file a case and can say that please negative pledge clause, you cannot use the same property for creating a fixed charge. So that will stop the company from breaking the prohibition and everything will fall in place. Sale of charged assets. Charged assets को sell करना, Kinza. A chargee with a fixed charge still has resource of to the property in the hands of the third party. The charge is automatically transferred with the property. Property only remains charged by a float charge if the third party had notice of it when they acquire the property. और Actually, the thing is like जैसे हमारा एक हाउस होता है, फिर हमारा लैंडलॉर्ड चेंज हो रहा है तो टेनेंट वहीं रहता है बट दी ओनर विल बी चेंज्ड। दिस इज द सेम केस। आपका वो वहीं पर है, आपका फिक्स चार्ज वहीं है बट ऑटोमेटिकली बस ट्रांसफर हो गया है, वो दूसरे दूसरे को अब आप होकर वो आपको होकर। हाँ, मगर यहाँ पे दूसरी बात हो रही है, सेल ऑफ चार्ज एसेट। इफ अ कंपनी सेल्स अ चार्ज्ड एसेट टू अ थर्ड पार्टी, अब ये एसेट है एक, इस पे चार्जेस लगे हुए हैं, मगर कंपनी ने इसको किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया, तो फिर क्या हम्म। होगा? तो जो वो चार्ज, ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसफर हो जाएगा, अब वो रिसीव करेगा सारे चार्ज। a chargee with fixed charge still has recourse to the property in the hands of the third party. The charge is automatically transferred with the property. यानी कि आप ये कह रहे हो कि जो ओनर चेंज हो गया तो अब ओनर, ये ओनर 1 था, ओनर 2 के पास चला गया एसेट, तो अब वो चार्जी जो है इसके पास हम्म। आएगा। हम्म। और ठीक है, इससे लेगा वो फिक्स अमाउंट। इससे लेगा। The property only remains charged by a floating charge if the third party had notice of it when they acquired the party. और जब floating charge का क्या होगा कि अगर थर्ड पार्टी ने नोटिस नहीं किया कि इसके ऊपर चार्ज है तो फिर वो खत्म हो जाएगा। हम्म। हाउ अनफेयर। अच्छा, नोटिस देना जरूरी है। अव्वल तौर पे तो देखें, फिक्स चार्ज जिस जिस भी एसेट पे होते हैं वो एसेट सेल नहीं कर सकते आप, हम्म। अनलेस देर इज अ कंपनी टेक ओवर, कि या पूरी कंपनी टेक ओवर हो रही है या पूरी की पूरी कंपनी ही सेल ऑफ हो रही है किसी को, तो ये सूरत हाल हो सकती है, मगर अदरवाइज इट बिकम्स वेरी इलीगल इफ यू सेल एन एसेट which already has charge without paying off the creditor, या तो आप उसको पे ऑफ कर दो। ठीक है जी, नेक्स्ट। बिकॉज आप खुद सोचो ना, आप खुद सोचो, इसको इसको लॉजिकली एक प्रैक्टिकल उसमें ला के सिनेरियो पे सोचते हैं। मैं कंपनी हूँ, मैंने अली से पैसे लिए, कितने पैसे? 1 लाख। ठीक है, लोन लिया है ना अली से मैंने, तो मैंने अली को बोले अली मेरे पास गाड़ी है, तो गाड़ी जो है मैं तुम्हें फिक्स चार्ज के तौर पे उसके कागजात तुम्हें दे देती हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं 1 लाख पे ऑफ कर दूंगी तो तुम मुझे मेरे कागजात दे देना, खत्म बात। अब मैंने क्या किया, मैंने मुआयदा तो तुम्हारे साथ इस तरह का कर लिया, तुम्हारा फिक्स चार्ज भी है, 1 लाख भी इस्तेमाल कर लिए, और अब मैं वो गाड़ी अपनी बहन को बेच दूं, मेरी बहन चला रही है गाड़ी, तो अब तुम पैसे किससे लेने जाओगे, मेरी बहन से या मुझसे?
बहन। मेरी बहन के पास ये जाएगा तो मेरी बहन तो बोलेगी कि 1 लाख मैंने तो तुमसे नहीं लिए थे लोन के तौर पे, वो तो मेरी बहन मेरी शादी ने लिए थे। मगर मैम जो कंपनीज हैं वो तो फिर प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होती है ना, तो हमारे लिए बहुत बेस्ट होता है कि वो बाद में नए प्रोसीजर्स बनाने से अच्छा है वही कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू हो जाए। तो थर्ड पार्टी का भी फेवर ही होता है टू बी ऑनेस्ट इसमें। पर मगर आप ये तो सोचो ना, उसने तो लोन का पैसा नहीं यूज किया ना, कोई भी थर्ड हम्म। पार्टी ने लोन का पैसा तो नहीं यूज किया, हम्म। तो वो क्यों वापस करे लोन का पैसा? लोन का पैसा तो मैंने यूज किए, हम्म। मुझे वापस करना है लोन का पैसा, और मैंने सिक्योरिटी के तौर पे अपना एक एसेट इसको दिया था, सिक्योरिटी के तौर पे, उसकी ओनरशिप नहीं हम्म। है उस पे। समझ रहे हैं बात को? जी जी। तो ये सारे मामलात आप देखें इस तरह फॉल करते हैं। हम्म। आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस डेफिनेटली रजिस्ट्रार को बताना जरूरी है विद इन 21 डेज। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा, किस तारीख को चार्ज क्रिएट किया गया, किस अमाउंट का था, कितने लोग उस एसेट पे वो रखते हैं, सिक्योरिटी रखते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ चेंजेस, कोई चेंजेस हैं, कोई मिस्टेक है, कोई ओमिशन है, तो वो सब आपने दुरुस्त करवाने हैं। फेलियर टू डिलीवर पर्टिकुलर्स, अगर आपने रजिस्ट्रार को 21 दिन में इन्फॉर्म नहीं किया तो फिर आप पे पेनल्टी भी लग सकती है। लेट डिलीवरी ऑफ पर्टिकुलर्स, लेट डिलीवरी करोगे तो भी पेनल्टी लगेगी। ठीक है जी। रजिस्टर ऑफ चार्जेस, तो चार्जेस भी जाहिर है आपको पूरा बताना पड़ेगा कि आपके कंपनी के कितने एसेट्स के ऊपर सिक्योरिटी है और कितने की है और कितने दिन की है और किस किस्म की है, फिक्स्ड है कि फ्लोटिंग है। डिवेंचर होल्डर्स रेमेडीज, राइट्स ऑफ अनसिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर्स, हुकूक क्या है अनसिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर्स के और हुकूक क्या है सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर्स के। नाउ दिस आल्सो आई वांट यू गाइस टू मेक द नोट्स in comparison form, and I think that's the last topic for this chapter. इसको रीड करें और फिर एक्सप्लेन करें। Rights of unsecured debentures. A debenture holder without security has the same right as any other creditor. डिवेंचर होल्डर के जो जिसके पास सिक्योरिटी कोई नहीं होती, तो बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे क्रेडिटर होता है, ठीक है, और उसी तरीके के उसके राइट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, what they could do, they could sue the company for debt and seize the property if their judgment for debt is unsatisfied. Likewise, the debenture holder, जैसे क्रेडिटर्स जो क्लेम कर सकते हैं अपने जो लोन है उनको, उसी तरह डिबेंचर होल्डर्स भी उनको जो है ना क्लेम कर सकते हैं via the law and the court system. And if the other person, the you can say defaulter, cannot give an explanation which can like जो उसको satisfy कर सके कोर्ट को आंसर को, so they can like seize the property of the defaulter. Secondly, present a petition to the court for the compulsory liquidation. Like सेम वाइज जैसे क्रेडिटर्स कोर्ट के थ्रू लिक्विडेट करा सकते हैं किसी भी डिफॉल्टर कंपनी को, इसी तरह डिबेंचर होल्डर्स भी जो है ना लिक्विडेट करा सकते हैं. Exactly. Likewise, third option is apply the court for an administrative order that is temporary reprieve to try and resecure. और likewise, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि कोई भी क्रेडिटर्स का अगर क्रेडिट वापस नहीं करते डिफॉल्टर कंपनी, तो कोर्ट एक टाइम देती है फॉर द रिवाइवल. तो वही चीज के लिए रिवाइवल पीरियड के लिए भी अप्लाई कर सकता है डिबेंचर होल्डर, जस्ट द वे सेम वे द क्रेडिटर्स डू. ये तीन जो है सिमिलरिटी है. ठीक है किंसा, राइट्स ऑफ सिक्योर्ड डिवेंचर्स। सिक्योर्ड डिबेंचर के बहुत इजी राइट्स हैं बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी दे हैव द मे बी द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द मेन एसेट और दे ऑलरेडी हैव a specific thing in their hand. So if the company is not giving them the money, that's fine. They know whatever the cost and they will get the, like for example it's a property or a machine, they will get it anyway, so they are very secured in that way. They will apply to court for its transfer to their ownership by foreclosure Yeah, order and appoint a exactly. receiver of it, an administration order कि उसको सेल करके मेरे को पैसा दो, ये भी हो सकता है. ठीक है जी. क्योंकि वो एक्चुअली ओन कर रहा है सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को, so that's
So alhamdulillah, we have completed this chapter. Any questions? Any point which you did not understand? No, ma'am. No? Okay, that's great. अच्छा जी, टेस्ट का क्या सीन है? कल क्लास में करना पसंद करेंगे? No, जी मैम, man. क्लास में चाहिए। 10 o'clock. I will do it before the class, inshallah. You will do before the class. Okay. ठीक है जी, तो यहाँ हमने कितना, अब हमारा कितना कोर्स रह गया? Let's see. I hope you guys are making your notes and you're catching up, Okay. right? Yes, ma'am. कैपिटल Okay. मेंटेनेंस एंड डिविडेंड लॉ रहता है आखिरी जो मेन चैप्टर है हमारा। बाकी ये सारा एक तरह से F1 का ही ब्रॉट फॉरवर्ड है, तो इसको भी हम क्विकली गो थ्रू करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो होपफुली दिस इज आवर लास्ट वीक फॉर द स्टडीज। Hmm. ट्यूसडे, कल ट्यूसडे है, कल आप लोग क्लास में टेस्ट ले लीजिएगा। टुमारो आई विल नॉट बी कंडक्टिंग द क्लास, आई विल बी कंडक्टिंग क्लास ऑन वेडनेसडे। ठीक है, Okay. Okay. कल क्लास में ही आप लोग टेस्ट ले लीजिएगा। मिस्टर Amsha, you guys can come online and Mr. Amsha will guide you for it. ठीक है, okay then. Okay, Okay, ma'am. ma'am. Thank you so much. You too. Allah Hafiz. Hafiz. Thank you. मैं क्लास ज्वाइन करके हम टेस्ट दे देंगे कल। ठीक है, थैंक यू सो मच। Hafiz. 10 तक।